मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग विपिन जी, हाउ आर यू? फाइन सर। कैसा चल रहा है आपका प्रैक्टिस वगैरह? प्रैक्टिस ही नहीं शुरू हो रही बस। सर, अभी प्लीज, दिस इज हाई टाइम, वी नीड टू प्रैक्टिस, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टुडे टॉक अबाउट, अदरवाइज ना सारा कुछ वेस्ट हो जाएगा, इतना कुछ वो करना। व्हाट आर यू डूइंग बाय द वे विपिन जी, व्हाट आर यू इनटू? आई एम ए रिटायर्ड पर्सन। दैट इज वेरी गुड, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू डू मेनी थिंग्स विद योर एक्सपीरियंस। रिटायर्ड फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। ओह वाओ, सारा बैंकिंग सिस्टम्स एवरीथिंग यू नो अबाउट। Very good. You can use your experience to share your experience with people. That you can do. You will be in lot of demands at the moment. So मन करता है बैंकिंग लेके काम करना, या लाइक बोरिंग लगता है वो काम को बहुत कर लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। मुझे बोरिंग नहीं लगता, काम तो ठीक है। अच्छा, वेरी नाइस। तो आप, मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों के पास इतनी एक्सपीरियंस है, इतनी सारी चीजें आप जानते हो, तो यू शुड लाइक स्टार्ट गाइडिंग पीपल। देयर आर सो मेनी पीपल हु लुक फॉर कंसल्टेंसीज इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बैंक एंड फैसेट्स। आप कर सकते हो उस चीज का काम, मुझे लगता है। सो दैट वे कुछ थोड़ी देर शुरू नहीं हो पा रहा काम, पता नहीं हो रीजन क्या जाएगा। है। व्हाट आई विल टेल यू टुडे हो जाएगा, मेरा यही काम है। आज का वेबिनार कोई कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। आज का वेबिनार इज ऑल अबाउट यू पीपल। नो न्यूमरोलॉजी, नो एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन, बट 2024 यू गाइस कैन नॉट मिस, अदरवाइज बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। दिस ओके। इज अ वेरी क्रूशियल ईयर दैट nobody in this community should miss. This is a ओके। high time that you guys should be alert, because it is a Saturn's year. Saturn will test all of you. Good morning, Gautam. Good morning, Sham ji. How are you, Sham? Good, Fine. good Thank you. morning. Very good. Good. आपका कैसा चल रहा है? हाउ थिंग्स आर विथ योर एट योर एंड? It's श्याम? good. अच्छा, गौतम हैज गॉन। Okay. Ah, okay. गौतम कैसा चल रहा है? सो यू स्टार्टेड प्रैक्टिस? Yes, Yeah, I saw your yes. smiling spell. That is very good. So today we will be very privileged to hear from Gautam about his achievements and everything what is about to make. और कल उसके साथ जो भी experience हो, we will see. Very nice of you. Very nice to meet you. So मैं आपको बाद में करता हूँ introduce सबके साथ. I have little, but you be ready with your script and all that you need to inspire today so many people. Okay. Okay. Very good of you. Yeah, thank you so much for being part of our community. So we have got Jasmine. Jasmine, welcome to the program. Good morning. Good morning, sir. How are you? How things are at your end? So today I want all of you to take a pledge for 2024. It is going to be an amazing year for this community. I really want this community to go very high. बहुत पढ़ लिया हमने 26-27 वीक। अभी इज अ टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशन टाइम, कि हमें अपना सारा कुछ अभी अप्लाई करना है। So abhi it is a high time that we are going to help a lot of people in our life and whatever we know. That is why today webinar is all about. अगर डर लग रहा है तो टाटा, you can just press end button and leave. But today I'm going to be very practical with all of you, going to ask you a lot of questions if you guys are ready. So so Gautam, I will give you one very big thing to you. You need to get in touch with Himanshu ji, and Okay. and get in touch with Himanshu ji, get all the details from him, whatever he is going through, and just send me an analysis. So take time. This is a service part of yourself. This is the philanthropic thing which you have to do. To get in touch with Himanshu ji. Himanshu ji, you will get in touch with, so you send a private message to Himanshu ji. Himanshu ji, you send a private message in the chat to Gautam. Gautam is one of the lead guys in from Delhi and Assam who is into the source guidance program, and we are going to source guidance program is actually practically implementing and changing people's life. So this is not a something you read or you think. You go in life, you meet the challenges, you meet the risk factors, and you change your life, you implement your life, you create the life. So Gautam is today going to share just the second session what his life has changed. So we are going to hear from you, and I request Gautam to take care of Himanshu ji, get all the details and all. See how we can help him, how we can transform his life and anything. And anybody who wants something which is very much stuck in your life, just get back to us. So we are not going to do anything like that कि हम सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं. We want to go into your life if you are willing to open yourself up to us. So we have a huge, Okay. And yeah, tell me okay. Gautam. And what is my assignment? I have to keep in touch with Himanshu ji, and what Yeah, first I you have will to do? just What send is everything from Himanshu ji. What is his problem? Like the way we created the form, you create a practical form, take everything from him. What he wants to do.
You do your analysis, how can we do the needful, then you share it to me, then I will tell you how to proceed further. So you will get a kind of a thing that what solutions we need to do in this part. Okay. So we are happy very Okay. much Okay. that Okay. Gautam is part of our team. He's doing a lot of work. He's going to do a lot of work for all of you. So probably you guys get connected with him. If I'm not around, he and Rukmani are going to be all with you. So they are very strong pillars and foundation of going to be our source community. So that is what. मगर ये only plain है, there are different colors plain है, अच्छा है. So we will just wait for some more time and before we start. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you, Himanshu ji. But Himanshu ji, be proactive, huh? We can't miss. Already 2023 gone. It is a year of Ketu. You guys all may have known what is right for you, what is wrong for you. The filtration has already taken place. Now it is time to do a little bit hard work. This is why this webinar is very, very important. And what is happening for the last 2 days, two different big communities are asking me to share their interest. So there is a very big media company. I'm going to do an assignment for them about all these things which we are doing. And then with my other expertise, they're trying to call me up. But what I'm trying to suggest all of you is that ये जब तक ये ईयर खत्म हो रहा है ना, अभी भी केतु आपके साथ है. यूटिलाइज दिस ईयर, जस्ट डू ए डिकम्पोजिशन. जो चीज आप लोगों को चाहिए अपनी जिंदगी में रखिए, और नेक्स्ट ईयर से यू हैव ए हार्ड वर्क स्टार्ट फॉर योरसेल्फ. हार्ड वर्क से शुरू कीजिए अपनी जिंदगी, and then there are like lot of opportunities are going to wait for us, all of you. So that is what I can say at this moment. Do not let any of your talents go waste at the moment, because extreme things are happening which I cannot tell at the moment, and only people who are going to be in the service mentality, there will be a different kind of resources which will be given to. I request all of you to please mute. Just let me do the needful for all of you. Just put my phone in silence. Give me 2 minutes time. यही बार बार भूल जाता हूँ इस फोन को साइलेंस में डालने के लिए. So this is 11:06. Thank you, Yogesh ji, for joining. Thank you, Nilima ji. Thank you, Maya. I am seeing you after a long time. Good morning, sir. Very good morning, Nagesh. Thanks for coming and joining here on Saturdays. I know you guys must be busy. So let's not waste further time. So what I was saying to all of you, मैं चौजिस बता रहा था, ध्यान से सुनिएगा, because we are entering into a year which is called as 2024. Now it is going to be numerologically, the frequencies are all about Saturn this time. No audio? Can you all hear me? Yeah. So Maya ji, just check your thing. I think your audio system has. Maya ji, you are not connected with your audio. Maya ji, your audio is not working. How can I say chat box? Chat. Please connect with your. Okay, there's still issue with Maya. She's not able to connect the audio. Connecting the audio finally. Mhm. Anyway.
some issues. Let her solve this issue, then she need to. Okay, so She can log out and re-log in. I told Wait. her to restart her system, so but I think unable to. You guys are able to give her a message. You guys just share with her what to do, what not to do. If you have any issue, you can directly send message across to her. I think she is connected. Yeah, Maya ji is connected. Good to go. Her audio is. Maya, Maya ji, can you hear us? Yeah, great, great. Thank you. So, welcome again, all of you. And this time, I have some humble request to all of you is that कि आप लोगों के पास अभी तक जो भी experiences हैं, जो भी चीज आप लोग जानते हो, जो भी चीज आप लोग सीखते हो, next year is application time. Next year is a time of karma for all of you. It's the karmic frequencies are coming from the Gregorian planets. So the Gregorian system, मतलब जो हमको applied numerology हमारे life में है, उसके पीछे जो planets आ रहे हैं, that planet is basically the frequencies of Saturn are going to be more stronger this year. This year was a year of Ketu. That is why you were all into various kind of spiritual inclinations. But this time, I think the filtration has already happened. If you guys are into a kind of an alertness system, अगर आपका on है, तो आप लोगों को ऑलरेडी कुछ चीजें फिल्टर हो गई है आपकी आत्मा तक. योर सोल हैज गॉट द मैसेजेस व्हाट यू गाइस हैव टू डू, व्हाट यू गाइस डू नॉट हैव टू डू. बट देयर इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस दैट इज नॉट देयर स्टिल इन द ब्रेन. तो ब्रेन को अभी नहीं मिल रहा. दैट इज व्हाई यू गाइस नीड अ काइंड ऑफ अ मेंटर हु विल टेल यू ये करिए, इस जगह जाइए. बट you have to do. Nobody else can do anything for you. Try to understand. आप पूरा गीता, उपनिषद, रामायण. Today I will be in a different flow altogether because now I will be changing a little bit style of my presentation because now is the time for application. Previous year was a time when I was teaching all of you. Now is the time that I will help you to implement what you guys are learning. If you guys are ready. The point is if you guys are ready. So now the source team or the source community cannot remain like that. They have studied enough. They have understood the 26, 27, 30 things they have studied. They have understood all the energies that is available to them. They have understood the energies which is inside them. उनको ये पता है उनके आसपास का क्या एनर्जी है, उनको पता है उनके पास क्या एनर्जी लेवल में अवेलेबल है, क्या आउटसाइड बॉडी में देवता कौन है, आउटर प्लैनेट क्या है, क्या चीज हमें ब्रेक करनी है. But try to understand one thing. You guys have been given this birth. You guys have been given the permission to live in this world because of your past karma, because something heaven and universe source your Atma wants to do, and you have to do it. Next year, the frequency, the devata of the karma is getting activated for all of us. It is for the general public. I will go into the detail of the specific personalization this time. What the battle we are going to fight. वो कौन सा बैटल हमारे पास आ रहा है जिसको हमें फाइट करना है. बट द कर्मा इज द की. वी हैव टू अप्लाई नाउ. और ये अप्लाई इतनी इजीली नहीं होगा बिकॉज वी आर पासिंग थ्रू अ फेज 9 एक साइकिल हम पास कर रहे हैं. सो हमें अष्टम में हम पहुंचे हैं. हम 7 कंप्लीट कर चुके हैं. नॉर्मल साइकिल, द वर्ल्ड साइकिल, अष्टम में पहुंचे. दिस 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हमें रिजल्ट मिलेगा. सो नाउ रिजल्ट इसलिए मिलेगा अगर हम इसमें भी नहीं कुछ कर पाए. हमारे पास लास्ट सेकेंड जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो प्यूरिफिकेशन का ईयर आएगा और उसके बाद एक नई बिगिनिंग होगी. तो आप कैसा चाहते हो अपनी बिगिनिंग? यू वांट अ ग्लोरियस बिगिनिंग और यू वांट अ काइंड ऑफ अ बिगिनिंग व्हिच इज हैपनिंग. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑफ यू ऑन योर चॉइसेस. आप क्या करना चाहते हो? So this is your choice. You have to be more alert at the moment as a spiritual being. Spiritual beings are very, very alert being. हम spirituality की बात करते हैं. There is nothing called as spirituality. Spirituality is becoming aware of who you are. आपका आत्मा क्या बोल रहा है आपको? हर मोमेंट में आत्मा आपको एनालाइज करता है. आत्मा आपको हर चीज में देता है. So you cannot now lose time. बहुत हो गया. हमने बहुत पढ़ाई कर ली. बहुत पढ़ाई करेंगे. पढ़ाई क्यों करेंगे? अब हम उसको implication करेंगे. A humble beginning also, okay, and gradual improvement. Yeah, gradual improvement. Kanban. Kanban is the word. Kanban is a Japanese word which you should all use and apply every day. Do a little bit increment in your life. मैं जो कल था, what is going to be the measure? Sorry, I'm going to talk a little different today because that is the flow which is asking me to speak to you like that. So, who can measure your success? Your success can be measured. I was talking to Gautam yesterday. We had a very wonderful session on the source guidance program. So I said, your measure is the person you were yesterday and the person you are today.
and your measure for the future will be what you are going to be. So how you see yourself as a future will all depend on how you see yourself and what are the actions you're going to take today. That is it. इससे अलावा कोई कुछ नहीं है. Your actions, your thought, your word, your deed, your action, your things, your commitment to yourself, your commitment to serve, all these things will matter. What is going to be you in the future and how you want to see. Suppose, for example, we are talking about finances. हमारा finances हमें इतना चाहिए उतना चाहिए, we are in debt, or I'm just giving an bold figure example here. If you want a particular kind of amount in your life, how many people are you serving? How many people are serving? If you serve a person, that person may not able to give you that money right now, but you know the universe, the source is very, very alive. Universe will compensate you from all directions. आपका ऐसा चीज खोल देगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा. आपको ऐसा नॉलेज दे देगा जिसको यूज करके आप बहुत बड़ा चीज कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल, आई वाज स्पीकिंग इन द मॉर्निंग, आई स्टार्टेड विद विपिन जी. आई जस्ट सेड, माने दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, डोंट टेक इट पर्सनली. So Vipin ji is from brilliant from banking sector. He knows a lot of things about banking. So I just said that there are a lot of people who want to get into the bank. There are a lot of people who wanted to know the integrity, different things of the bank. So can a soul as a person like Vipin ji do something for those people? So maybe that is also going to give him a start on the day. So the next year is very crucial for all of us. That is the time everything will be taken care of. That is the time source and the universe and the numerology numbers, the planet stars, galaxies will decide आपका health कैसा होएगा, आपकी energy कैसी होएगी, आपकी relationships कैसे आएगी. Yes, this will all happen with all of you, and these you are going are very lucky guy that you guys are talking to me at this moment because of some other reason. It's okay, Srinivas. I am still not started with you. I am waiting for things, but I am just keeping the thing a little bit on the pace today. So what I am saying to you is that we cannot miss 2024. So 2024 has its own mysteries inside. There is a mystery which is actually, we just look into it, there's a mystery coming in the picture. So 2000 year, it will be all about networking with people. So this whole era is about people, emotions, the help, the healing. So that is why a lot of people are entering in this world in this kind of timing. So this all is about how you innovate your life. Innovation is the key in this time, because क्या हो रहा है, एक अंधेरे की तरफ हम जा रहे हैं इस ईयर में. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. मतलब आपको सरप्राइज हो जाएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड अ पिक्चर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी अ काइंड ऑफ सिनेरियो. आप एक बहुत ब्रिलियंट रूम में हो, आप नए पहुंचे उस रूम में. इट्स अ ब्रिलियंट रूम, बहुत अच्छा है, बहुत लाइट्स जल रही है, बहुत सारे सोफा सेट रखे हुए हैं, टेबल चेयर, एवरीथिंग इज देयर, देयर आर ग्लास थिंग्स. एंड सडनली वहां पे लाइट चली जाए, व्हाट विल हैपन? सडनली देयर इज नो लाइट देयर. So how will you move in this room? How will you think starts going to work in that room? So try to understand there is a frequency also in this year about that. So then you need to be open your inner senses. अर्जुन के साथ एक बार कहानी हुई थी, उनको ट्रेन करने के लिए उनको द्रोणाचार्य ने क्या किया था, ही वॉज ईटिंग द फूड. सारे पांडव बैठे खाना खा रहे थे, एंड सडनली वहां रात का टाइम था और गुरु ने ना लाइट बंद कर दी वहां के सारी चीजें. नाउ ही वांटेड टू सी हाउ द पीपल वर रिएक्टिंग. So what happened? Everybody घबरा गए, सब हट गए. But Arjun was the person who could know what is there, where exactly, because he had an inner sense which he activated. तो जब वो inner sense activate किया, जब फिर से लाइट जला गया, Arjun didn't made a move from there, and his everything was finished over there. He understood the greatest teaching that day. अर्जुन ने सोचा, द्रोणाचार्य ने बताया भी नहीं ये वाली वर्ड उसको, बट अर्जुन ने सोचा कि अगर मैं खाना खा सकता हूं रात को अंधेरे में, तो मैं अंधेरे में तीर भी चला सकता हूं. He was very good with his eyes. His eyes was very powerful, very focused. Now he activated another eye. You want to know what the eye he activated? Does anybody have the idea which eye he activated? Can anybody type on the chat box what eye he activated? It is, you may be right, but you are not totally right. Anybody else? Anybody else? What eye he activated? What do you think that अंधेरे में हमें क्या सबसे ज्यादा एक्टिवेट करनी चाहिए? थर्ड आई इज गुड, वेरी गुड. नहीं रविंद्र जी, आई एम नॉट सेइंग अगर आप अंधेरे में है यू कैन नॉट डू सूर्य नमस्कार देयर. सो इट इज वेरी गुड. आई ऑफ आत्मा. He activated the eye of the ear. He started listening more. Okay, he started listening more. So this is the one point I want to tell you. L comes in the alphabet. L comes before S.
Okay, L comes before S. बोलने से पहले, this is the key. आपका जिंदगी का ना ये सबसे बड़ा key है. This is the greatest code of astrology I'm sharing today. First house, second house. First, remember this. First house, your shikha, your connection with the god, your lagna, everything. This is, I'm mixing astrology, numerology together. Second house, your tongue, your mouth, what you speak. इससे पहले ये आता है, कान आता है. Okay. Now from onwards 2024 you cannot miss. Start listening to people first. क्या बोल रहे हैं, क्या चीज बोल रहे हैं. आपके आसपास ही कुछ लोग होंगे who have pain, who have problem, who had passing through challenges issue. Listen to them. Use this, the eye of the ear, eye of the ear. उनसे सुनिए. Then use this power of your tongue to speak and suggest them the thing which you guys all are master over here. मुझे 100% मुझे मालूम है आप लोग जितने भी यहाँ पे आए हो आप हर एक फील्ड में मास्टर हो. Find out those people, those who require your help. And this year 2024 will be a kind of judgmental year for all of you. And you will be asked if you have any talent, if you have any knowledge, if you have any abilities, if you have any vocation, how many people have you helped and don't transform, transcend them, take them to a different dimension. उनके आत्मा तक पहुंचने की कोशिश कीजिए. That is what I want the source community people to do. If the word is source getting attached, रीच द आत्मा. पहले आत्मा तो देखिए, आत्मा का प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, मेरे मेंटर बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा कीजिए. पहले प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, उसके बाद उसको ट्रांसेंड कीजिए. उसको उठाना है, उसकी जिंदगी को हमें अपलिफ्ट करना है. आप लोगों के पास, सबके पास ये एबिलिटीज है. You guys are born with it. You have enough heard things. You have enough understood it. Now it is a kind of application time. Now it is a kind of application time. So Krishna did the very same thing. He heard everything. His senses was open. Then he used his third eye. सुन के कहा क्या शब्द भेदी बाण जिसको बोलते हैं, उन्होंने मारा, उसके टारगेट में हिट किया उसको चीज है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दिस टाइम. देयर इज अ कोड of the tongue. If you wanted to can control your tongue, speech, food, everything, which is very difficult to do, you will have the greatest impact to your next generation. आपका next generation की अगर आप life बदल सकते हो, the speech you do, the words you speak will be very very important to you, and that is going to impact your next generation. There is a code in astrology, maybe जब मैं detail में जाऊंगा, there that will activate your samadhi in your body. आपका जो पान अपान ऊर्जा है उसको एक्टिवेट करेगा बॉडी के अंदर. This is very important to become balanced in life. If you want to become balanced in life, it starts again from the speech. बैलेंस जैसी जिंदगी आ जाए, जैसी जिंदगी में बैलेंस आ जाता है, वॉट एवर यू वॉन्ट इन द लाइफ यू कैन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग एंड अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ. आपको कुछ भी चाहिए, पैसा, जो पैसा का कोड है 11th हाउस ऑफ अवर हाउस इज कनेक्टेड विद द 8th हाउस. 8th हाउस इज अ लाइफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, समाधि, deep thinking, deep work. 8th house is connected with the 5th house. 5th house is your past karmas. It is connected with your children, with all the skills which you have got, and it is connected with your power of speech, the talk. So this is very very important. Now you need to use this for the service of the mankind. This is the first thing you need to do. Then you need to use your talent to serve mankind, because this is the year which is coming, which is very important. Now I will tell you something. Though the whole frequency of this 2024 is going to be a Saturnian frequency, but there will be different people will have different things. So we are going to play on the one side Saturn, and then there will be a personal number. So I will teach you the calculation of the personal number. Quickly, I will share my, I'll try to share my whiteboard today, and I will try to tell you, just many of you may be knowing, but there are some people who do not know how to check the person. How many people know how to calculate the personal number here? How many people do not know how to calculate the personal number? Raise your hands or type in the chat box, I do not know. आपको पता नहीं हिमांशु जी, you do not know how to calculate personal number? नहीं, I actually explained in one of the dasa system. How many people know how to calculate personal number? I know, Ravichandran know. How many people? Nagesh know, Jasmine knows. Okay, rest of the people do not know. Okay, so Maya ji do not know. Okay, I will do the calculation. Just bear with me, all of you. So if you guys always, acha, next year is also one more important thing. Next year is all about confidence. Okay, now you need to be confident enough to come on the screen. Okay, क्यों? क्योंकि आप लोगों को अपना चीज अगर दूसरों तक पहुंचाना है, because there may be similar kind of frequencies which we have experienced some days back. I'm telling you this thing. I do not want to share on this thing, all this in the personal front.
but because this is still a kind of an open webinar. So I am telling you, there may be certain kind of frequencies which may you feel. So that time we need to be connected. So you need to be confident to show your face, show your confidence, be natural, and come in the screen as much as possible. So those people who really wanted to do something, digital medium will be a big thing, big boon in the next year. So you need to utilize this energies as much as possible. I'm telling you, because this is the time हर चीज आपसे ना इनोवेशन पूछेगा, और आज के डेट में विदाउट टेक्नोलॉजी इनोवेशंस का कोई मतलब नहीं है. So you need to be very alive. Just don't listen. Come, chat. Let's contribute. Let's talk and let know each other once more. So I'm going to share with you how to calculate the personal number. So it is a kind of system of dasha which I've already shared. Nagesh, if you can quickly tell me if you can see my screen or not. You can see my screen. Just do this. Okay, great. So suppose anybody is born on say December 12, 1994. Say a client comes to you and he asks you for the personal number. कि मेरा personal number क्या होगा? So how we calculate the personal number? So the next year is going to be 2024. So next year हम 2024 की बात कर रहे हैं. So just before I go to 24, I will see the bifurcation of the 24. So this is it is made up of दो moon plus एक राहु is making this combination as. So हम जब total year का calculation करेंगे, it is 2 plus 0 plus 2 plus 4. So this whole till so we have got a combination of here moon, here 0. 0 is a very brilliant thing. There is the source. So it's the source sciences are becoming more powerful in this case. Again 2. So again 4. Now what is this significance? So ये हम जब करेंगे इसका 8 आ जाएगा. So this is the year of Saturn basically. This is the year of Saturn. So background में the frequencies which is emitted to the world is of the Saturnian frequencies. A certain type of energies which will be more prevalent in this earth is Saturnian frequency. But this Saturn will made up of what? This whole century is made up of people. This is all about people. This century is all about your emotions. This is all about your mind. How you use the mind, how you go towards the deeper energies of the thing, deeper energies of the soul in this case, and how you serve people, how you heal people, how you help people, how you care for people will be very important for us. And then there is a Rahu which is going to be coming in there, the darkness. So this darkness is not that darkness we are talking about. This is an opportunity in disguise. अंधेरे में कैसे आप चीजों को activate करोगे life के अंदर. So this is going to be all a mixtures of the energies which is going to help and work you out. So you guys be prepared on this thing. So जहां पे आंख बंद करके अंधेरे में जाने के बाद you can use your inner senses, ears, सबको सुन के हाथ टच करके you can activate it and you can move through the thing. That is what this year will demand from all of you. Challenges आएंगे, बहुत बड़े-बड़े challenges आएंगे this year में. There will be a lot of upheavals which will take place. There will be, we will see that I don't want to actually share still, but there are certain things which is going to happen that people will become more powerful this time rather than since it is being supported by Saturn, which is the lower section of the people. So they are going to topple many things. जो लोग अभी तक पूरा काम नहीं कर चुके ठीक से, maybe some CEOs, big shots of the people, उनका पूरा एकदम सफाया कर दिया जा सकता है इस बार. So that is kind of problem. So people who are fighting elections, आप देखोगे unexpected results may take place from somewhere. So कुछ countries में ऐसा होगा कि एकदम से पूरी कंट्री को टॉपल कर दिया जाएगा. सिचुएशंस विल मूव वर्स बिकॉज सैटर्न ऑल रिप्रेजेंट द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसको सप्रेस करके गया था. तो जहां पे भी सप्रेशन होगा वहां पे चीजें will be coming at. And Saturn wants what? Saturn is all about hard work. Saturn is understanding right and wrong. So मेरा एक कृपा है, try to correct yourself till now. You know, we make a lot of mistakes in life. Many things नहीं रह गए. थोड़ा सा hard work इस पर चाहिए हम सबको. And hard work करके थोड़ा ज्यादा ही हार्ड वर्क देना पड़ेगा बिकॉज सैटर्न विल नॉट लेट द थिंग हैपन. सैटर्न एंड जुपिटर के क्वालिटी है, ये दोनों बहुत बड़े बड़े प्लैनेट हैं. आप जो भी काम करते हो उसकी रिजल्ट थोड़ी देर में आती है. तो सैटर्न आपको बहुत सारे काम करने से इस बार रोकेगा, बट हमें रुकना नहीं है. उस काम में अगर कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, लोगों के अच्छे के लिए होगा, इवेंचुअली दैट वर्क विल बी डन फाइनली. ओके, दैट वर्क विल बी फाइनली डन. So is this clear for you? This time we will need to do a lot of hard work. We will need to do a lot of good work. We should know what is right and wrong. We should know what is the thing which
which needs to be done. And so clearly, सही राह पे रह के hard work करके right and wrong को समझ के we need to move ahead in this year. Now let us understand. Yeah, it is not my guidance, Jasmine. It is now you need to activate your Atma Karaka. You check with the person inside who was present before your birth, who is there with you, and he or she, that person, that Atma inside is the person who knows everything about you. You wanted to have a greatest relationship. It knows what you have done, what you have not done. It knows who is the right person for you. वो आप कौन से आपका एबिलिटी है जिससे यू कैन बिकम अ रिचर पर्सन, मोर वेल्दी पर्सन, मोर केयरिंग पर्सन, मोर सर्विस ओरिएंटेड पर्सन, सब कुछ उसको मालूम है. नाउ दिस इज द टाइम यू शुड नो एंड एक्टिवेट दोस पर्सन, एंड दीज आर द सब्जेक्ट व्हिच वी आर लर्निंग, एंड वी शुड बेटर यूटिलाइज दिस सब्जेक्ट, राइट? So you are your best guidance. You need to now activate those energies in your life. Okay, so that is good of you, and do it. So how we do the personal year हम कैसे निकालते हैं? Very simple. I talked about dasha system. तो दशा में हम क्या करते हैं? This is very important for us. तो ये जो ये नंबर है, we add up this number, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं 12 इंडियन स्टाइल में, 12 12 19 94. तो इसमें हम क्या करेंगे? The only change which is happening all the time is this. So we are going to replace this by 2024. तो जैसे ही हमारे पास ये नंबर आ गया तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस इसके जगह पे हम 2024 को लेके आ जाएंगे. तो यहाँ से हमें 8 मिल रहा है, यहाँ से हमें 3 मिल रहा है, यहाँ से हमें 3 मिल रहा है. तो इसका हम टोटल कर लेंगे 8 9 10 11 12 13 14. सो वी आर गेटिंग 14 ओवर हियर. सो 4 और 1 5 हो जाता है. तो दिस पर्सन, इसके लिए is the 5 is the personal number. Absolutely fine. Now I want all of you, I'll give just maybe 30-40 second time. Be ready with your personal number and just write it down on the chat box. अपना personal number निकालना बहुत जरूरी है. क्यों निकालना जरूरी है? Because this is going to play a lot of ripple around. Okay, your time starts now. मैं 1 minute दे रहा हूँ आपको. Find quickly, and now you need to do quick calculation. All of you find out your, even if you know, find out your personal number, because I am going to take the next step. Just write it down. 5 4. Just write the numbers. 6, good. 6, good. 16 people are there. Yeah, you can. Right. Rest all the people quickly. That's it. What about other people? Okay. Those who will be proactive will also have an advantage in this life. So be proactive wherever you need to, but don't just stay back. Yeah, stay back करना नहीं है. जहाँ पे भी opportunity मिल रही है, jump करिए, because universe is watching you 24/7. Heavenly energies are watching you. Who takes initiative matters a lot. Who helps? जो सबसे पहले सोच समझ के काम करता है, that is the beauty of the next century, next world. Okay. So birth year को plus करना था. नहीं, बर्थ ईयर को नहीं प्लस करना था. जो आपका बर्थ ईयर है ना, उसको हटा के ये जो 2024 है उसको डालना है उस जगह पे. सो यू जस्ट रिप्लेस दिस, अनिप्रा, यू रिप्लेस दिस, इसको हटा दो यहाँ से. ये आपका बर्थ ईयर है, बर्थ, ये दोनों नंबर रहेगा, आपका डेट रहेगा, आपका मंथ रहेगा, उसके साथ हम जो कमिंग ईयर आ रहा है उसको रखो. उसको रख के और कैलकुलेशन करके जल्दी बताओ, बिकॉज यू नीड टू नो दिस वेरी वेरी वेल एज अ स्टूडेंट ऑफ. Yeah, great. So now try to understand what is happening here. Try to understand very well what is happening here. जो भी आपका ईयर है, द गेम प्ले कैसे होता है यूनिवर्स के अंदर, तो गेम प्ले इज हैपनिंग लाइक दैट. एक जगह से ना आपकी, सर, इज द पर्सनल नंबर चेंज? ये पर्सनल नंबर चेंजेस एवरी ईयर. दैट इज कॉल्ड एज अ दशा पैटर्न इन न्यूमरोलॉजी. So what is this year? There will be 2 planets which will play a role. एक planet जो आपका personal number है, और एक planet जो overall energy frequency दे रहा है. So dasha planet pattern will change every year. So last time the overall frequency was of Ketu. Next year the frequency is coming of Saturn. Okay. And there will be one personal thing which is going to interact with the all the things, with the heavenly frequencies which is coming on the earth. So these two will interact with one another, and that will decide our future, how we are going to do kind of lot of energies, frequencies will start coming in our life. So this is all clear with all of you? So what I'm trying to say, there is 2 numbers. So there is, I will call it as a number X. This is your personal number. So this is your personal number, and there is a number which is going to be 8. So
Now the whole game will be an interaction of this, then there will be a kind of result that will happen in your life. Okay, this is very important. So by now you should be very clear कौन सा planets के साथ कौन सी चीज जेल करती है, सैटर्न के फ्रेंड कौन है, सैटर्न के एनिमीज कौन है, सैटर्न इन फ्रीक्वेंसीज के साथ नंबर 1 का इंटरेक्शन कैसे होता है, 2 का इंटरेक्शन कैसे होता है, 3 का इंटरेक्शन कैसे. नाउ दोज इवेंट्स विल हैपन इन योर लाइफ. वेरी सिंपल इन 2024. अब आप प्रीडोमिनेटली कौन से एनर्जी के तरफ जाओगे डिपेंड करेगा आपका, ये दोनों अलाइनमेंट में काम करेंगे या ये दोनों सेपरेटली काम करेंगे. नाउ दैट डिसीजन यू हैव टू टेक. अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर ये ईयर ऑफ सैटर्न है, सैटर्न चाहता है आप हार्ड वर्क करो, बट इफ देयर इज अ प्लैनेट लाइक मून कमिंग हियर, सपोज फॉर एग्जांपल आई विल गिव इनटू मोर थिंग, अगर मून यहाँ पे आ रहा है और साथ में सैटर्न आ रहा है, दिस इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ विश योग इन योर लाइफ. इट्स अ पॉइजनस योग व्हिच इज गोइंग टू हैपन बिकॉज moon is a very fast planet and Saturn is a very slow planet. Saturn wants you to become careful. इतनी जल्द वो मत करो, ऐसे मत करो, इस तरह से मत करो, and they are going to create a kind of a poisonous yoga. Now, what if your moon starts working for the Saturn? मतलब क्या है इस चीज का? मून क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑलवेज टेल यू, मून रिप्रेजेंट्स पीपल, योर माइंड. मून रिप्रेजेंट्स हीलिंग. सिंपल सिंपल तरह से लो, डोंट गेट इनटू वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज मेरी एडवांस कोर्सेज में आपको इतना मटेरियल मिलेगा कि प्लैनेट्स के ऊपर कि आप मुझको पढ़ के खत्म नहीं कर पाओगे. सो दैट इज देयर. सो एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स में है, बट इन द बेसिक न्यूमरोलॉजी आई क्रिएटेड अ बेस फॉर यू. सन को कैसे देखना है? सन इज अ लाइट. मून कैसे देखना है? मून इज द माइंड. आपको वेट, जुपिटर क्या चाहिए? वेट विजडम है भाई, नॉलेज है आपका, खुशी है लाइफ का है. राहु क्या है? इनोवेशन है. राहु आपका सडन चेंजेस. इस तरह से हमको सिंपल रखना है चीजों को, ज्यादा ओवर. एक चीज समझ लो, एक कैरेक्टरिस्टिक समझ लो, उसके ऊपर आप काम करना शुरू करो. तो आप सिंपली समझिए, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें अगर मून भारी हो गया, एक बंदे का काम है अभी नेटवर्किंग करना, उसको लोगों को हील करना, बट सडनली हिज माइंड इज गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड देयर इज अ सैटर्न इन फ्रीक्वेंसी कमिंग ऑन यू, his life will be not so good. Trust me, इस coming year में उसका life good नहीं है. Then he need to focus his complete lunar energy into the Saturn this time. Total lunar energy को उसको hard work में लगाना है. If he's a poet, if he is a kind of creative person, if he's into healing, let it be a kind of a challenge for him. Do a kind of hard work, locate people, work from them, purify him. This will work in a complete and the perfect harmony for him. This we have to catch this time. Not only for you, for your family members, for your relatives, friends, जो भी आपके पास आ रहे हैं, जो भी clients आपके पास आ रहे हैं, उनके तरफ आपको ये चीज देखना है और उनके तरफ आपको इसको लेके काम करना है. This is the secret of next time. But be very careful. It is actually Saturn which is going to play a lot of role in your life, right? बिकॉज केतु हैज डन इज प्यूरिफिकेशन. तो हम आप क्विकली समझ जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे. डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको समझना है कि पर्सनल नंबर जिसका जो भी है, मैं क्विकली बताऊंगा. आपका जब भी पर्सनल नंबर आएगा तो आप उसमें एक रिलेट कर सकते हो, इफ यू ऑलरेडी डू नॉट नो कि अभी कैसा चीज करेगा. इज दिस क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? यूज द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर विथ यू. Is it clear? Nagesh is very fast to say clear. What about other people? Any question, anything, जो doubt है, please come on the screen. Please clarify your doubt because this is the whole process which we are going to base. Nilima ji is already into the subject and learning. Jasmine is clear. What about other people? Anipra, Shashi ji, clear. Okay. What about Maya ji? Maya ji, is it clear? What about Vipin ji, Devashish? हिमांशु जी क्लियर हो गया ये चीज? माया जी लिटिल, व्हाट इज दिस लिटिल? डू यू वांट मी टू रिपीट? प्लीज टेल, रिपीट करना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Because this will help lot of things. This will help into relationships. This will help you finally guide everything of your life. Please repeat. Fine. Tell me. That is what you should do. Why I'm here in the class? Thank you so much. Personal number I understand. ठीक है. Very nice. सो पर्सनल नंबर नहीं सिर्फ गौतम समझना है हमें. देखो पर्सनल नंबर तो आपका नंबर है, आप कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, बट पीछे से एनर्जी इज कमिंग ऑफ द सैटर्न. सो यू आर बेसिकली नाउ. अनिप्रा आई विल गिव यू अ पनिशमेंट. इतना क्लास करने के बाद पूछ रही है सन मून क्या है. हाँ, how to interrupt the Tuesday with the personal number. Yeah, that is what I'm coming to, Shyamji. So I'm just going to repeat once more to all of you what is this thing. So please bear with us because this is a family. हम अपना किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ सकते. So हर एक everybody is important for us. Okay.
Maya, give me your date of birth, if it is okay with you, or you can give any other person. Just give me an example date of birth if it's problem for you. This part have not clear. Yeah, Gautam, I will come back to you. Maya, can you just write down the date of birth? Okay, Anipra has given. Maya, have a look at it, huh? जो मैं कर रहा हूँ screen में. तो Anipra has given a date of birth is she has given a thing that is 3rd of. This is 3rd of which one should I take? Anipra ने पहले भेजा है, हम अनिप्रा का करते हैं. 3rd of 3rd 4 1970 उन्होंने शायद ऐसा कुछ लिखा, तो अभी भाग रहा है जोर से. 1970. Okay, this is the what example has been given by Anipra. So यहाँ पे हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो नंबर होता है which is very constant. This is a number, this is a number, this is a variable factor. ये जो year होता है ये variable factor होता है, ये हर साल बदलता रहता है. और ये जो 3 और 4 है ये नहीं बदलता, ये हर साल आएगा आपके पास. बट ये नंबर 1971 हो जाएगा, 1972 हो जाएगा. अब हम जब पर्सनल ईयर निकालते हैं, ईयर का पर्सनल नंबर, पर्सनल ईयर बोलते हैं उसको. सो हाउ डू वी टेक पर्सनल ईयर? इट इज कॉल्ड एज पर्सनल ईयर. सो पर्सनल ईयर कैसे निकलता है? पर्सनल ईयर में हम जो ये ईयर है इसको जो करंट ईयर आने वाला है या जिसमें हम जा रहे हैं उससे रिप्लेस कर देंगे. तो हमारे पास जो ईयर है ये है 2024. तो इसका हम क्या करेंगे, पर्सनल ईयर निकालने के लिए हम 3 4 इसको सिर्फ 2024 कर देंगे. इज इट ओके माया जी? हमारा सारा कुछ बदल जाएगा, हमारा न्यूमरोस्कोप नया मिलेगा, यहाँ पे हमें एक न्यू पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल देखने को मिलेगा. तो ये हमारा पर्सनल ईयर हो जाएगा हमारे पास. या ग्रेट. अब हम इसकी टोटल करेंगे, सो 3 + 4 इज 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो ये वाला जो नंबर आया इसका टोटल है 15 हमारे पास. ओके 15. तो इससे आते हैं मिलता है 6. तो ये जिसका नंबर है उसका पर्सनल ईयर इज 6. डिड यू गेट इट ऑल ऑफ यू? जस्ट रेज योर हैंड्स. ओके, अब क्या है द होल गेम, द होल साइंस इज ये वाला जो 6 नंबर है, ये जो 6 नंबर है आपका पर्सनल नंबर इज गोइंग टू हैव एन इंटरेक्शन विद द ईयर नंबर. इसका ईयर नंबर इससे हमें 8 मिल रहा है, दिस इज 8 नंबर हमें मिल रहा है. The whole game will be some kind of a permutation combination of these two energies. That means 6 is represented by the frequency of Venus. शुक्र और सैटर्न के बीच में गेम होगा इस बार, इस ईयर में, इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए. उसके लाइफ का जो पैटर्न बनेगा, जो एनर्जीज, जो बायोरिदम आ रहा है, वो 6 का बायोरिदम आ रहा है प्लस 8 का बायोरिदम आ रहा है. तो पीछे से सैटर्न आ रहा है, इज अ स्लोएस्ट प्लैनेट, ए साधु, ए काइंड ऑफ स्टर्न व्यक्ति. और एक 6 का क्या है, 6 को कंफर्ट चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, ब्यूटी चाहिए, पैसा चाहिए, लक्ष्य चाहिए. अब मैं एग्जांपल दोबारा दे रहा हूं. ये 6 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर अस. 5 के बाद 6 आता है. इस 6 डिसाइड करता है आपका लाइफ किस तरफ जाएगा, व्हाट इज योर काइंड ऑफ लक्ष्य. अगर इस इंसान ने, इस नेटिव ने अपना लक्ष्य अपने लिए रखा, इसका लक्ष्य खुद के लिए रखा, खुद का कंफर्ट, खुद का खींच, ये बहुत इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद दिस पर्सन. सो बिकॉज 8 चाहेगा ही नहीं वो पर्सनली ये काम करे. इट्स अ काइंड ऑफ अ जनरल थिंग. अब अगर इस 6 ने अपना लक्ष्य बनाया, सो दैट ये लक्ष्य ऐसा बनाया, अगर 6 ने अपना लक्ष्य बनाया कि वो लोगों के लिए काम करेगा, ही हैज अ ग्रेटर पर्पस फॉर लाइफ, देन एंड ही इज रेडी टू डू हार्ड वर्क, बिकॉज इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर इवन दिस पर्सन टू डू हार्ड वर्क एट द टाइम. बिकॉज 6 इज अ काइंड ऑफ वेरी कंफर्टेबल. कंफर्ट चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, बहुत सारा शुगर चाहिए, ऑल दिस थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग. बट 8 को क्या चाहिए? 8 इज अ काइंड ऑफ तपस्वी, इज अ हार्ड वर्कर. आप समझ रहे हो, दो एनर्जीज यहाँ पे आ रही है पैटर्न के. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपका लाइफ किस तरफ लेके जा रहा है आपको. ये इस तरफ लेके जा रहा है कंफर्ट की तरफ, या सर्टन की तरफ लेके जा रहा है. तो इन दोनों का जहां पे हैंडशेक होगा, लाइफ विल बी ब्रिलियंट, लाइफ विल बी इन अलाइनमेंट. अदरवाइज देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन अ काइंड ऑफ लाइफ. So this is what a kind of a crux. Now we are going to understand with I'm going to quickly tell you different interactions क्या होते हैं. मैं before that I'm going to take of the numeroscope. आप इसका एक न्यूमरोस्कोप पैटर्न भी बना सकते हो. इसको बोलते हैं ताजिक पैटर्न. आई हैव नॉट टोल्ड यू अबाउट ताजिक. ताजिक मतलब उस साल का आपका एक न्यूमरोस्कोप होता है. दिस पर्सनल नंबर विल टेल यू अबाउट द न्यूमरोस्कोप ऑफ दिस पर्सन. तो अगर मैं इस बंदे का न्यूमरोस्कोप बनाता हूँ इस टाइम का, so he has got a 3, he has got a 4, this person doesn't have the 1, so 1 is missing from this time. So this person has 2. Yeah, these are the energies, don't go with that. We need to see that that frequencies and the flow.
and this person has 6 with it. The 7 is at the moment missing because last year ये 7 चला गया इसके life से, it has gone because it is a kind of event. Understand, numerology is a kind of event. वो करके चला गया, it has finished his work. We need to see it. This has finished his work. So अभी 8 को दे दिया possibility, and this is overall. This is 8 is also there on the mind level. There is a 5 missing, and there is a interaction of 9 missing. So now जो भी नंबर्स अवेलेबल है इस पर्सन के पास इस ईयर में, इस ताजिक ईयर में, these are also going to play a kind of a biorhythm in this person that utilize these energies to do the grand work for you. So कुछ प्लैनेट्स लास्ट ईयर आके उनके ताजिक से चले गए हैं, कुछ आए हैं अभी नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं. नाउ यू नीड टू सी दिस हॉरोस्कोप, कौन सा पैटर्न आपका बन रहा है. नाउ दिस पर्सन दिस ईयर नीड्स टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ द स्टमक इश्यूज. ठीक है, we need to be just very careful about his wealth even, क्योंकि क्या wealth conflict करेगा. आप देखो यहाँ और ये दोनों क्यों सिमिलर है. Why I am getting the same picture from here and here? Because 6 आ गया यहाँ पे, ये वेस्टेज करवाएगा इस इंसान से, चांसेस है वेस्ट करवाएगा. अगर वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा पैसे वेस्ट हो जाएंगे यहाँ पे. ये जो मेटेरियलिस्टिक प्लेन है अंदर, इसमें इशू है, प्रॉब्लम है, स्टमक में प्रॉब्लम है. There may be something which Ketu has already done in this person's life, but if he doesn't able to understand, there will be a problem. But what is this? This person may have some kind of bounds of luck with that person. कुछ किसी तरह का luck बहुत आ सकता है. Ability to fight back. यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इसको बहुत ज्यादा नेटवर्क मिले लाइफ के अंदर. There are a lot of things will start coming in this person's life. So now you can utilize these energies and think about yourself कि न्यूमरोस्कोप कैसे एक्टिवेट होगा इस जीवन के अंदर, इस पर्टिकुलर दशा के अंदर. So that is called going to be a ताजिक. एक है जो आपको मिला हुआ है एकदम बर्थ के टाइम से, बट दिस इज गोइंग टू बी दी अभी का जो बन के आ रहा है पैटर्न्स. क्या बायो एनर्जी आपके पास अवेलेबल. नाउ दिस पर्सन शुड immediately work on bringing stability in his or her life, maybe taking some further help from the higher world of Lord Ganesha, do a kind of a Surya practice and all, looking for more opportunities in that. So इस तरह से हम लोग इसकी एक पैटर्न निकाल सकते हैं, so that this vibrations can remain in a kind of a balance in her life. Is it clear, all of you? Just type in the chat box. Yeah, 8 plus 8, then what happens is, Gautam, if it is 8 plus 8, so there is a double impact of Saturn. So you see, we were discussing about you, and something heaven is telling you to do at the moment. Tremendous hard work is the key. Tremendous hard work, right? So you have to be on the right path, do tremendous hard work, and you will get to see the picture. And tremendous stoppage in your life. You know, आप जो काम करने जाओगे उसको रोका जाएगा. Why? बिकॉज अगर आपको हर्डल रेस क्रॉस करना है, अगर आपको बहुत बड़ा पेड़ बनना है दुनिया के अंदर, अभी इज द टाइम वेयर सैटर्न इज गोइंग टू डू व्हाट. सैटर्न इज गोइंग टू इज अ मिट्टी के नीचे की चीजें हैं. अब आपको ना रूट्स बनाना है अंदर. यू हैव टू टीयर ओपन द लैंड. आपको अपना बेस बनाना है टू गो हायर एंड हायर इन योर लाइफ. सो दिस इज द टाइम एंड अपॉर्चुनिटी जब सैटर्न आपको बोलेगा भैया सो मत, जल्दी उठ जाओ, डू योर वर्क, हार्ड वर्क जितना करोगे सैटर्न इवेंचुअली विल इन द थर्ड ईयर. आप देखोगे, यू चेक योर बैलेंस, बैंक बैलेंस नाउ, Saturn is सोना, it's gold. आप थर्ड ईयर फ्रॉम डाउन द लाइन आप देखो आपके बैंक में कितना पैसा है. ओके, या टू, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. दिस इज अ विश योग फॉर यू एट द मोमेंट. यू नीड टू नो योर माइंड. आप अपना पूरा माइंड ना अच्छे कामों के लिए लगाओ. एंड you need to pray to Lord Ganesha, Lord Vishnu, and you need to pray to, you just need to see sun god. आप एक काम करना, अनिप्रा थोड़ा पानी लेके, अनिप्रा आपके लिए है ना, हाँ, तो ये आप थोड़ा सा सन गॉड में पानी डालना, सो दैट सनरेज कैन पेनिट्रेट यू. आपके बॉडी में सनरेज बहुत चाहिए इस ईयर में. सो सनरेज आपके विब्ज्यूर बना के, और जहां जहां जाना है पहुंच जाएगा. दिट इज द ग्रेटेस्ट साइंस आई एम टेलिंग. थोड़ा पानी कॉपर में डाल के, थोड़ा उसके अंदर फूल डाल के ऐसा ड्रॉप करना कि पीछे से सनरेज आपके बॉडी में, तो सनरेज विल पेनिट्रेट इन योर बॉडी. जितना ज्यादा जाएगा सो वो आपको बेनिफिट करेगा. बी विथ सोर्स को समझो, सोर्स साइंस को समझो. सोर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज सन विल इवेंचुअली टेक यू द सोर्स. इज गिविंग आदित्य. सो 8 मैंने बताया, 8 + 8, इट इज अ ईयर ऑफ सैटर्न. यू नीड टू डू अ काइंड ऑफ हार्ड वर्क इन योर लाइफ, और डिग आउट योर पास्ट. देखो वहां से क्या चीजें आ रही, उसको लेके थोड़ा सा हार्ड वर्क करके गिव इट बैक टू द थिंग. सो 1 and 8 आर एनिमी, फादर एंड सन. ओके, सो क्या है, सन इज अ काइंड ऑफ अ लीडर, वो जूनियर को नहीं मानता. तो आपके लाइफ में ना एक डिस्टर्बेंस आ सकता है जहां पे आपके जूनियर, कोई लोअर है, सर्वेंट है, कोई भी चीज है, वो आपसे रिवेल्ट कर सकते हैं. दिस इज द टाइम आपको क्या करना है, एज अ पर्सन, यूर सन,
सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर जूनियर्स, कि वो जूनियर्स का आपको सोचना पड़ेगा इस वक्त, अदरवाइज वो रेबल करेंगे। आप देखोगे इस वक्त वर्ल्ड में एक चीज होगी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी को वाइप आउट कर दिया जाएगा, बिकॉज दे हैव नॉट थॉट अबाउट एनीथिंग अबाउट द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो सप्रेस्ड क्लास है वो जागेगा। अब आप देखोगे एक पैटर्न बन रहा है, बिकॉज दिस पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो नो थिंग्स। सो इफ यू एग्री विथ मी, जस्ट लुक इन टू द न्यूज, जहां पे भी कुछ भी हायर पोजीशन में किसी को डाला जा रहा है, अंडरस्टैंड वो किस जगह से उठ के आया है। जस्ट ट्राई टू चेक हिज बैकग्राउंड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर लेवल टू द प्रेसिडेंट लेवल टू द चीफ मिनिस्टर लेवल। नाउ यू गाइज आर स्पिरिचुअल पीपल, यू शुड नो पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो हैव एस्ट्रोलॉजर्स विद देम, सो दे नो। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अब कहाँ से उठा रहे हैं चीजों को, फ्रॉम वेयर दे आर ब्रिंगिंग देम बैक। सो बी वेरी अवेयर विथ, अभी नया का इलेक्शन उनकी रिजल्ट देखिए, किस किस को हटा के, द पीपल फ्रॉम अ वेरी हाई क्लास बैकग्राउंड जिनका जमींदारी था, उनको हटा के किस तरह के लोगों को उठा के डाला जा रहा है। सो इफ यू एग्री, इफ यू कैन सी दिस थिंग, सो आई थिंक दिस इज द ब्रिलियंट थिंग, कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट ईयर अबाउट टू ब्रिंग। सो अभी भी अगर पॉलिटिकल पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, नाउ नेक्स्ट ईयर यू विल नो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट इज दिस। दे थिंक दिस इज सम काइंड ऑफ अ हम्बग और समथिंग। So you guys should know, be very aware. So as a spiritual people, be very aware कहाँ पे क्या चीज हो रहा है, and that you apply in your life, miracle will start taking place. I'm telling you, I'm very confident about the community which I'm trying to build. Yeah, Devashish, please go ahead. Unmute yourself and tell. Good morning, first of all. Very Yes, good morning. yes, good morning. Just I wanted to tell you, the point is that today I got a little, kind of a stagnation because of my network issues. No So problem. I just request you very first, if you just give the outline till what you say. So it will be very easy for me to correlate. Okay. Very Now, first outline. I will give you very nice, but next time, say what you all have to do is to be again be proactive in what we are just doing. Very good, but थोड़ा देर पहले ऑन कर लेना सारा सिस्टम नेटवर्क। अभी हमें बहुत कुछ रोका जाएगा इस कमिंग ईयर में, सो वी हैव टू बी, दिस इज वेरी गुड थिंग, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ, आप नेक्स्ट ईयर में जो काम करने जाओगे उसमें काफी ज्यादा चीजें आपको रोकेंगे, बट स्टिल यू हैव टू विन द गेम, फाइनली यू विल बी अ विनर। अच्छा, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि 2024 में कौन सी एनर्जीज आ रही है हमारे लिए, कौन सी फ्रीक्वेंसीज आर बीइंग रिलीज। सो इट इज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सैटर्न, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सैटर्न इज द कार्मिक प्लैनेट। आपके कार्मा जो अभी तक आपने किए पास्ट 9 इयर्स के, उसके ऊपर नजर रखा जाएगा, तो उसका एक रिवॉर्ड एंड अवार्ड या लेसन होगा नेक्स्ट ईयर। सो पीपल हु हैव नॉट बीन वेरी केयरफुल विद देयर लाइफ, दिस नेक्स्ट ईयर विल बिंग ए काइंड ऑफ अ रिजल्ट। एंड हम हर एक इंडिविजुअल का पर्सनल नंबर यहाँ पे निकाला है, कि उसके पर्सनल नंबर के साथ जो जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज आएंगी उसकी इंटरैक्शंस कैसे होगी। तो दैट इज व्हाट वी वर ट्राइंग टू डिस्कस। सो नेक्स्ट ईयर इज अ ईयर ऑफ सैटर्न। दिस इज अ हाई टाइम दैट यू नीड टू नो आपके पास क्या एनर्जीज है। मैं बार बार बोल रहा हूँ हर एक को, इज लाइक ए रिपीटेशन, आपके पास क्या एबिलिटीज है, टैलेंट्स है, वोकेशन है। नाउ नेक्स्ट ईयर इज अ टाइम टू अप्लाई इट विथ हार्ड वर्क, कि नहीं अप्लाई करना ही है जी, इसको हमें डालना ही है। सो बट अगेन वहां पे सैटर्न क्या करेगा, आप लोगों के साथ थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करवाएगा, सो दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बहुत ज्यादा हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में ब्लॉकेजेस है, आई एम नॉट सेइंग एवरी लाइफ विल कम, बट देन यू नीड टू बीट द थिंग, यू नीड टू बी अहेड ऑफ द थिंग। सो आपका एक पर्सनल एनर्जी बनेगा और एक यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी आएगा। ये दोनों आपस में कैसे अमलगमेट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी लाइफ की रिजल्ट क्या होगी। सो दिस इज व्हाट वी वर डिस्कसिंग टुडे, how important is the year 2024. 2024 is going to be an amazing important year of the life, because उसके बाद वाला जो year आएगा, that's going to be a purification year. Write it down अभी, word purification year, that is the time of closure year फॉर ऑल ऑफ यू। वो एक आपकी जिंदगी का एक पैटर्न खत्म कर देगा, आपकी जिंदगी से काफी सारे रिलेशनशिप्स को हटाएगा, आप काफी ज्यादा आपको प्रिपेयर करेगा, सो दैट आफ्टर दैट 26 जो आएगा हमारे लिए, इट्स अ न्यू बिगिनिंग तो फॉर द होल वर्ल्ड। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हम किस जगह खड़े हुए हैं यहाँ पे। आप सोर्स के एक पार्ट बनना चाहते हो, या आप यू वांटेड टू बी पार्ट ऑफ योर ओन सेल्फ, you have to decide at the moment. So you need to be very very careful what is the universal pattern which is forming, and you will see eventually what I am talking about. Let July go, मतलब जब election complete हो जाएगा, after that you see what are the things happening. You need to be well prepared in terms of your resources. Please write down the word resource, अपना मत छोड़ना, savings को बढ़ाओ। I'm telling you, this is, please mark my words, I cannot say further in the thing, you will see what may be the pattern.
अपने सारे टैलेंट्स को अपना यूज करो. अब बी वेरी केयरफुल विथ एवरीथिंग. यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. कौन सामने क्या बोल रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट 10 टाइम्स बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, बिकॉज हियर सैटर्न विल गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी. ऐसे ही मत कर देना कोई काम. ये बोल रहे वो बोल रहे, सोच समझ के ध्यान क्या इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा, क्या आपके फैमिली के ऊपर होगा, क्या सोसाइटी के ऊपर होगा. एवरीथिंग यू गाइस शुड टेक इनटू कंसिडरेशन बिकॉज टेकिंग एनी अदर फर्दर स्टेप, because otherwise the issues can be a little difficult for what is going to happen. Take care of your family as much as possible. Take care of the people around. जो community build कर रही है, be part of the community. एक दूसरे का support करो, because the finally the community will help one another. So that is the kind of thing which you should be very very careful. So what example, if you were very clear with the news and all, so be ready what I am trying to tell you. So आप थोड़ा news भी पढ़ते रहना, but you yourself guys be very prepared, because there are 18 16 of them who are here at the moment. What I am speaking may have a this thing. So this is what we were trying to discuss. So Devashish, are you okay? So now I will tell you that on a rough way, किसका you are okay with now? Did you understood the personal number and the universal frequencies क्या Yes, yes. year number? Yes, Right, yes. great. So Yes. okay, I'm going to stop this screen share. Yes. Thank you. So I'm just going to share my main number. Maya ji, is it okay? समझ में आ गया? Any other thing? Any question? So we have done on the frequency of 2024, that is 8 we are getting. We all come to know that it is 8. So this is very important. We calculated the personal year. So everybody has a different personal year. Now I'm going to tell you what are the different patterns which is going to happen. So for people who are having number 1 as a personal year, so number 1 represents Sun. Sun and Saturn do not gel together. So there will be issues. There will be a lot of issues in the office. There will be a lot of people will face a lot of issues in their home front. Maybe there's some issues with the thing. People need to be careful about their blood. All the people, they need to be careful about their ego. Number 1 people, because यहाँ पे ना बहुत जगह ऐसे टाइम आएगा जहाँ पे आपका ईगो बहुत हाई हो जाएगा. So यहाँ पे बेस्ट मेथड इज टू एक्चुअली बिकम अ गुड लीडर. सो दैट लीडर असली वही होता है जो अपने लास्ट बंदे तक को देखभाल करता है, एकदम जो कमजोर है उसको भी देखता है. दैट इज अ गुड लीडर. सो आप एक गुड लीडर बनिए. आपके घर में एक सर्वेंट भी आ रहा है ना, तो उसका भी समझिए, बिकॉज द सर्वेंट को आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सर्वेंट कितना बड़ा एक अंदर आपके अगेंस्ट में कुछ लेके आएगा दिस टाइम. सो आप अगर सर्वेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, देयर मे बी प्रॉब्लम, देयर मे बी काइंड ऑफ थेफ्ट विच यू शुड बी वेरी केयरफुल. बिकॉज क्या होगा कि सर्वेंट आपको देख रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली और एनी अदर वे. सर्वेंट कैन सी यू एंड लगेगा मालिक के पास इतना कुछ है, एंड थिंग्स कैन गो रॉन्ग, बिकॉज कभी कभी 8 जो है वो दूसरी फ्रीक्वेंसीज भी लेके आता है. सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल. सो देन यू नीड टू बी अ काइंड ऑफ अ गुड लीडर इन योर लाइफ. आपके पास वो लाइट होना चाहिए कि आप सबके जिंदगी के अंदर वो लाइट का काम करो. सो अपॉर्चुनिटीज आएंगी नंबर 1 को, बट देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज मे ब्रिंग अ काइंड ऑफ अ कुछ कुछ ब्लॉकेजेस के साथ आएंगी. कहीं पे कुछ चीजें होंगी. यू नीड टू ब्रेक दैट थिंग आउट. यू नीड टू मूव अहेड इन दैट ऑप्शन. So number two people should be extremely careful this time, I will tell, because this is going to bring a kind of a wish yoga आएगा, because there are 2 energies coming. जैसे sun के लिए was a very big power. Eventually sun will win. अगर अपना power और दिमाग ठीक से लगाएंगे तो सन जीत जाएगा. मून के लिए इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मून में ना बहुत ज्यादा बायोरिदमिक चेंज होगा इस ईयर में. कहीं पे तो मून की फ्रीक्वेंसी, मूड्स विल गो वेरी हाई, एंड द मूड्स विल क्रिएट फ्रीक्वेंसी विल अट्रैक्ट इवेंट विल क्रिएट अ काइंड ऑफ अ रियलिटी फॉर देम. सो द मून पीपल शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन डायरेक्टिंग एवरीथिंग. उनके लिए एक अलग से उनको गोल बनाना पड़ेगा. दे नीड टू एक्टिवेट देयर शुक्र. दे नीड टू बी वेरी स्ट्रांग इन देयर गोल, एंड दे शुड नॉट वेवर इन देयर गोल, बिकॉज इमोशंस हिट करेगा. कुछ चीज हो रही है, अचानक से रुक गया, तो दोज थिंग्स माइट अफेक्ट देम इन द इमोशनल लेवल. सो दे नीड टू ग्राउंड देमसेल्फ एज मच एज पॉसिबल. दे नीड टू डू द लोअर डैंड 9 नंबर का प्रैक्टिस जो हमने किया था, लोअर डैंड एंड प्रैक्टिस. दे नीड टू प्रैक्टिस दैट थिंग एज मच एज पॉसिबल. दे नीड टू ब्रिंग देयर एनर्जी टू द लोअर डैंड एंड द ओशन, दाव में लेके आना है उनको फ्रीक्वेंसीज, so that they can actually remain grounded, because हिलेंगे वो अभी थोड़ा सा, because tides जाएंगे मन में. इधर tides, एंड टाइड्स के साथ ना एक मैग्नेटिक पुल हो रहा है उनका. मतलब समझो सैटर्न इज अ काइंड ऑफ वेरी हार्ड मैग्नेट व्हिच इज गोइंग टू पुल देम डाउन. सो दिस इज द काइंड ऑफ फॉर द पीपल. हाँ, पर्सनल नंबर प्लस द ईयर नंबर दोनों का डिटेल फॉलो करें निप्रा. ये पर्सनल नंबर से मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए. So third number people, it's going to be good year for them. Why? Because Jupiter and Saturn gels very nicely. Because Saturn
जुपिटर क्या है? जस्टिस, जस्टिस लिखते हैं, विजडम, राइट्स, एंड सैटर्न इज द गिवर। सो आप दोनों मिलके आप लोगों का खाता जो भी अपने पास में काम किया, अच्छा बुरा, ये आराम से देंगे। मतलब they will give you the result. So it is very good, going to be a brilliant year for three people. Lot of knowledge and they can activate the knowledge with the hard work. तो जो लोग कुछ ऐसे पोजीशन में, स्पेशल ब्यूरोक्रेट्स हैं, स्पेशल बिजनेसमैन हैं, जहाँ पे जो विजडम रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए अगर उनका 3 पर्सनल नंबर है तो दे कैन बेस्ट यूटिलाइज दिस ईयर। मतलब इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, नॉलेज प्लस हार्ड वर्क। सो दिस इज लाइक कर्मा प्लस ज्ञान, दोनों चीज की एक अच्छी बेस उनको मिल जाएगी। Number 4 people, Saturn generally sometimes do not gel with 4 because it is a complete andhera and Saturn is a kind of a magnet there. But the people having number 4 will at least have a potential possibilities because of a kind of a innovation that they can bring about this year. This year will demand innovation. जो innovative company है, अच्छा काम कर रही है, they will think. Yeah, Nagesh, tell me. Unmute and speak. Unmute your system. Unmute. Sir, one small clarification, sir. Yeah, please go ahead. If 3 is unlucky for somebody, how would it affect actually? See, there is one thing always remember, on the backside, it is the karma which matters. आपका suppose 3 unlucky is not present in your chart, but you are at the moment sitting here with us talking in this subject. So the soul world and everything is seeing you. Okay. Maybe some virtues have been given to you at the moment, but how you utilize that, day you were talking about that you belong to a very royal thing. Now, if you can utilize this knowledge and send it across to some people and think, you may not get that problem which is good. So this is like an opportunity given to your soul at the moment. It is like an opportunity your personal year is bringing. This is not there. There's a kind of vacancy, but if you can fulfill with the karma, miracle can take place. Actually, it's like a blessing in disguise. हाँ, actually. मतलब क्या है कि जुपिटर आ गया है आपके साथ। हाँ, जुपिटर आपका रिसेप्टर नहीं है जुपिटर को अंदर डालने के लिए। हाँ, जुपिटर को कुछ मिल ही नहीं रहा सामने। ओ व्हाट इज दिस गाय, ही इज नॉट एबल टू यूज मी, आई एम नॉट फॉर देम। नाउ नागेश डेवलप्स अ पैटर्न दैट ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्टिंग पीपल, सर्टेन थिंग्स ही स्टार्टेड डूइंग। Now Jupiter will start, oh Nagesh, good of you that you are started taking. Let me give you a little bit more. Let me give, ऐसे करके things will start happening in your life. So this is an opportunity window. तो Okay, नाउ sir. यू गाइज आर गोइंग, अगर नॉर्मल कोई इंसान, उसको पता ही नहीं चलेगा आपस में क्या हो रहा है। नाउ यू गाइज नो कि अगर मैं इस जगह जाके ये चीज करता हूँ, इट विल एक्ट लाइक अ बिग रेमेडी फॉर यू। धम से स्टार्ट And रेस्पेक्ट, yeah, स्टार्ट रेस्पेक्टिंग बुक, गिव sure. लिटिल बिट नंबर 3 रुपए करके लोगों को देना शुरू करो। जो थर्सडे को यू स्टार्ट हाँ, गिविंग a little bit फॉर टू द priest and all this kind of things. So 3 देखो, rupees and 3 rupees. 3 रिलेटेड, तो 3 है यहाँ पे, 3 थर्सडे को 3 हाँ, और सैटरडे को just start giving to some kind of a beggar or something. So 8. I am just saying as a ballpark, don't take it literally, मतलब उस Right. दिन आप जो चीज करोगे, हाँ. so that will matter a lot for the things, virtues given, virtues. Now And इसका दूसरा चीज क्या कर सकते हो, start respecting the subject. Simple, जितनी भी किताबें है घर में अच्छा जगह रखो, साफ करके रखो. That's also another way of doing a small karma on that. Become a good teacher yourself. Teach this subject. ठीक है, Oh. देखो क्या होता है. Then Yeah. these are the going to be the some kind of miracle which will take place in your life. One small thing, sir. I'm Yeah, missing go ahead. I'm missing 8 in my grid actually. This year I'm getting 8 because of personal year is 8. So this personal, अच्छा, Sorry. personal year you're getting 8. So No, now, no, no. This year is 8 actually. okay. Year number is 8. My Okay. personal year number is 1. But actually, because of 8, I'm going to get 8 in the grid, right? This Yeah, 8. this is the Tajik 8 you are getting. The Tajik Yeah, 8 you are getting. From That's- birth you are not getting, but so try to understand it is 2 ways. It is like, हाँ, एक आपके अंदर रिसेप्टर है या नहीं, एक आपको हाँ, बाहर से आ रहा है। इन दोनों हाँ, के बीच में देयर इज अ karma. So हाँ, it is a little different subject. Try to understand it. मैंने ये चीज समझ जाओगे तो मिरेकल होना शुरू होगा लाइफ के अंदर. हाँ, It is like you do not have 8. That is why हाँ, you know what has happened in your life. Lot of time you have taken decisions which is not there, which is not, it has not gone in favor of you. So what has happened now, आपके अंदर वो रिसेप्टर नहीं है, बट बाहर अभी प्लेनेट खड़ा हुआ है इस वक्त, वो आया है आपका, आपको आपके कर्म को वो करने के लिए. तो there's an event which is waiting for you. Now आपको कैसे रिएक्ट करना है, if you understand the quality of 8, then अगर आप उस बेसिस में कर्म करते हो अभी भी, so that like you're blessed with something, utilize that something, you're doing a hard work, doing a right direction, utilizing your karma. आप जिस करने के लिए आए हो, you are very clear, start working on the thing.
Now this will give a flash. Okay, done. He has done something. Now next time when he comes, he brings something good for you. Another 7 patterns he creates for you. So जैसे ही अपना काम करके चला जाएगा, so न्यूमरोलॉजी इज लाइक इवेंट. अभी जो घटना घट रही है वो आपको कुछ बता रही है करने के लिए. आप इस साइड जा सकते हो तो उसका नेगेटिव रिजल्ट होगा, इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा. तो अगर मैं आपको ऊपर इस क्लास में बता रहा हूँ, यू आर लकी इनफ टू बी हियर, तो यू शुड नाउ नो आपके पास ये दोनों एनर्जीज आ रही है. हाउ यू इंटरैक्ट विद दिस टू एनर्जीज इज व्हाट द नेक्स्ट 2 years and the next 9 years will take place till again Saturn comes like that. You got that? Yes, sir. Very much, sir. Thank you so Yeah, very much. thank you so much. Yeah. Anybody, any query? Because this webinar is very very important. Don't make mistake in this webinar. Otherwise, मैं आपको इतना मैं ऑपरेशन नहीं डालता आप लोगों के ऊपर. मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है कि मैं अपना चीज अच्छी तरह बोलूं और आप अपना चीज अच्छी तरह समझे. थैंक यू नागेश फॉर डूइंग दैट. शशि जी प्लीज गो अहेड. सर अगर अच्छा पर्सनल चलो, एक नंबर चीज तो 8 अच्छा है हुआ. तो एक चीज अच्छा हुआ शशि जी. कैन यू ऑल रिकॉग्नाइज समथिंग, अ स्मॉल चेंज आई सी टुडे. Her aura has improved and she is like this Vishnu position and she is not sleeping anymore. अब बेड में सोई नहीं है. That is good. आप थोड़ा हाँ थोड़ा उठने की कोशिश करो. टेक ए बेड एंड ट्राई टू लिफ्ट योरसेल्फ अप. सो अब जितना सीधा रहोगे ना, आपका पार्किंसंस में इफेक्ट आएगा. बिकॉज आपका अंदर एक फ्लूइड है. आपने मिस कर दिया मेरा पिरामिड लेक्चर, मैं उसका रिकॉर्डिंग नहीं दे पाऊंगा. न्यूरोप्लास्टिसिटी आई टॉक्ड अबाउट. आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर न्यूरोप्लास्टिसिटी इंपॉर्टेंट. और अंदर एक हमारी फ्लूइड होती है. जितना आप सीधा बैठोगे ना, आपकी बॉडी विल स्टार्ट वर्किंग इन अ डिफरेंट वे एंड थिंग. तो आप थोड़ा सा कोशिश करना, तो मतलब सपोर्ट लेके ही सही, मतलब बॉडी को थोड़ा ठीक सा है सर. उठाने की कोशिश करना. ठीक है, दैट विल बेनिफिट यू अ लॉट इन द लॉन्ग रन. यस टेल मी, ठीक बताइए. है सर. सर अगर ये 8 आए तो पर्सनल नंबर, पर्सनल नंबर 8 है ईयर तो नंबर. 8 है. 8 क्या बोल रहा है आपको कि शशि जी आप थोड़ा सा अपना हाथ पैर चलाइए, थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए बॉडी के अंदर, थोड़ा सा हार्ड वर्क कीजिए, थोड़ा पसीना निकालिए आपके बॉडी सर से. मेरा जब मेरा तो 3 आ रहा है. आपका 3 आ रहा है ये ना, तो एक काम कीजिए, जो मेन ईयर नंबर आप किसके लिए पूछ रहे हैं ये? ये 1 तो मेरी बेटी का है. अच्छा, 8 है. तो उसको लाइफ में थोड़ा सा अभी कष्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी सी ब्लॉकेजेस आएगी, उसको तोड़ना पड़ेगा अपनी मेहनत से. ऑन द राइट डायरेक्शन. एक डायरेक्शन गलत नहीं होना चाहिए, उसमें काम करके शी नीड टू डू अ काइंड ऑफ अ हार्ड वर्क. बिकॉज अब डबल हार्ड इंजन आ रहा है, डबल हार्ड वर्क का टाइम आ रहा है, उसको उससे डबल ग्राइंड करवाएगा. आपने देखा है वो चक्की पीसने वाला चीज होता है, यस यस. जो जो चक्की पीसता है जब, तो वो अंदर फिट जाके वो गेहूं बनता है. तो अभी वो चक्की पीसने का टाइम है, सो दैट उसको नेक्स्ट ईयर उसको पता चले कि उसके लाइफ से वो जो चक्की के अंदर जो काले काले दाने हैं उसको कैसे रिमूव करने हैं. तो जो उसके बाद ईयर आएगा, क्या एग्जांपल दिया मैंने, वीट दैट इज सन. तो उसके बाद उसको पूरी अपॉर्चुनिटी जिंदगी के अंदर मिलेगी कि अच्छा आटा खा सकती है वो. एक्चुअली सर शी इज गोइंग यूक्रेन फॉर जॉब. सो यूक्रेन जाने से पहले शी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ एवरी सिचुएशन, सोशल सिचुएशन देयर. एवरीबॉडी, इट इज फॉर एवरीबॉडी, इट इज नॉट फॉर जस्ट हर. शशि जी हैज टेकन ए ब्रिलियंट ब्रिलियंट थिंग. कोई भी कंट्री में जहां पे भी, मैं बोल रहा हूँ अभी वर्ल्ड वाइड, there will be a kind of rebellion which is going to happen. Just notice what I am saying at the moment. ठीक है, एक rebellion होगा. तो you need to be very careful. जो कंट्री में जा रहे हैं उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी सारी चीजें should be seen before taking decisions. Okay, तो वो चीज सारी देख ले. और स्पेशली those countries who have suffered, I will, फिलहाल के लिए I will not comment on that. You guys are better enough कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन देयर. सो अंदर बहुत सारी ऐसे करप्शन चल रही है वहां पे. शी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिफोर शी टेक्स अ डिसीजन. आई एम नॉट स्टॉपिंग हर फ्रॉम गोइंग देयर. सो दिस इज नॉट अ सेमिनार. आई डोंट वांटेड टू take decision for all of you. Here I am giving you the energy pattern what is forming. Now you guys are intelligent enough to understand the pattern what I am trying to tell you. So this time she need to do a hard work. अगर उस जगह भी जाएगी तो उनको हार्ड वर्क से गुजरना हार्ड पड़ेगा. वर्क इफ करना. शी इज कमिटेड, जब चीजें स्टेबलाइज करेगी वहां पे, मे बी शी इज गोइंग टू गेट अ वेरी हाई पोजीशन. दैट आल्सो आई एम टेलिंग. सो दिस इज द वे यू शुड सी दिस. ओके सर. ओके. ओके, तो योगेश जी, इफ यू हैव 6 मिसिंग एंड 6 कमिंग इन लाइफ, यू वर्क फॉर सैटर्न, दैट्स इट. अभी 6 के लिए अभी काम मत कीजिए. शनि को वो दोस्त बनाइएगा अपना. सिंस यू आर इनटू अ इंडस्ट्री दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग इंडस्ट्री, उस पर ध्यान दीजिए कि लोगों को बेनिफिट मिले आपके आपके वजह से, आपकी चीजों के वजह से, आपके बिजनेस के वजह से.
एंड आपके साथ ऑलरेडी प्यूरिफिकेशन हो सकता है, तो आप डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह सैटर्न इज एक्चुअली प्यूरिफाइंग यू। अभी तो आपने बताया, बट आई एम टेलिंग यू कि यू ऑलरेडी नो व्हाट हैज हैपेंड विद यू। सो यू डू टेक डिसीजंस व्हिच इज गोइंग टू, आप अपना लक्ष्य डेवलप करिए जहाँ पे लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आपके बिजनेस में, एंड यू बी वेरी वेरी केयरफुल इवन ऑफ द एनी अदर एक्स्ट्रा पर्सन जो भी आपके साथ है, उनके ऊपर आप थोड़ा देखभाल कीजिए, उनकी सारी चीजें नोटिस कीजिए, सो दैट यू टेक राइट डिसीजन इन लाइफ। सो आपका लक्ष्य शुड बी इन दिस टाइम टू हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस, टेक केयर ऑफ योर एवरीथिंग, ज्यादा खर्चा नहीं करना है हमें, सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू बी केयरफुल। सो नंबर 4 इज राहु। राहु इज समथिंग, शशि जी आपका कंप्लीट हो गया ना, तो आप हैंड्स डाउन कर दीजिए अपना अभी। तो राहु क्या करेगा कि राहु, the only thing better part is this, राहु is like a kind of अंधेरा, like a kind of black hole, and it is also a kind of innovation। राहु का कोई लिमिट नहीं है, जैसे अंधेरे का कोई लिमिट नहीं होता, इसका कोई लिमिट नहीं है। So these persons should be try to limit themselves at the moment, and the one suggestion for them will be you innovate your life. This is this, since the year also is having the biorhythm at the end of 4, so this is also going to be, so यहाँ पे ना आपको बहुत सारे डुअलिज्म से गुजरना पड़ेगा लाइफ के अंदर, बहुत सारी डुअलिज्म आपको दिखाई देगी लाइफ में, बट देयर विल बी काइंड ऑफ स्ट्रगल बिटवीन समथिंग which is a kind of unknown thing, unknown energies which wants you to do something this, but सारी चीजों को एक साथ आपको क्लब करने के बाद आपको you need to be absolutely be in the hard work scenario. So technology innovation is what I will suggest for these people who have number 4 as their personal number, because 4 and अंधेरे में एक पावरफुल मैग्नेट काइंड ऑफ थिंग है, जो एक सैटर्नियन एनर्जीज हैं जो आपको बहुत सारी चीजें करने के लिए रोकेगा, बट इसको अमेलगमेंट, बिकॉज number 4 is a multi-dimensional brain and number 8 is a brain। सो नंबर 4 का एक मिसिंग है, वो बहुत सारी चीजें ना सोचता है, बहुत डीपली सोचता है, बट बहुत जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है लाइफ के अंदर। सो सैटर्न का क्या काम करना है, ये जो मल्टी डायमेंशनल ब्रेन है, इसको जो सैटर्नियन ब्रेन है विच अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, इन दोनों ब्रेन के साथ मिक्स करके he has to utilize these grand energies of Rahu, the innovative energies of the Rahu, and bring it into a kind of a direction which again benefits the masses, which again points him to do a kind of a ethical work. So Rahu is also a non-ethical planet, and he has to do a kind of ethical work in this life, and then the things will gel much more better, the things will take much more better। इसीलिए जो लोग मतलब अपना लक एंड फॉर्चून बहुत अच्छा है उनका, जैसे नंबर 4 इज ऑल्सो रिप्रेजेंट लक, दीज पीपल समटाइम्स बिकम्स वेरी लकी। सो इस ईयर में लक को भी चैलेंज किया जाएगा। अगर यू हैव बीन वेरी लकी इन दिस वर्ल्ड, समथिंग विल शो द वे, समथिंग विल कम एंड ब्लॉक यू, दैट ओके लक इज नॉट एनफ, वी आर ऑल्सो हियर टू वॉच यू व्हाट यू डू। सो इट इज लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग विल हैपन। इवन द बिगर कंपनीज जो है, वहां पे हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, कहीं अंदर जो जो बहुत जल्दबाजी करके काम कर रहे थे, स्पीड से काम कर रहे थे, गलत तरीके से चीजों को लेके जाते हैं, मे बी देयर विल बी इश्यूज विद दोज कंपनीज आल्सो अबाउट टू हैपन। So we will see certain purifications in a big way, because इसके बाद वाला year is another year which is very important. So the number 4 people should utilize their brain, multidimensional thought process to do right justice to their task. That is what is recommended at the moment. Number 5 people should just activate their subconscious at the moment. That is why it is a peak year for them. What they plan this year is going to manifest in a big way, because this is going to be a very much changing year for them। ये year इनके लाइफ में बहुत सारे changes and turmoil लाएगा, mercurial frequencies लेके आ रहा है। It is like high down frequencies, and जब तक ये high down frequency नहीं होता, हमें पता नहीं चलता लाइफ, because this is kind of a stability। That is why number 5 is taken as a stability number in the numeroscope chart, बीच में रखा जाता है, बिकॉज इसमें सारी चीजों की ऊर्जा ऐसे ऐसे करके चलनी शुरू हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इनके लाइफ में अभी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी नाइस ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज मरकरी एंड सैटर्न जेल टुगेदर, बिकॉज मरकरी टेक्स अ लॉट ऑफ टीचिंग फ्रॉम सैटर्न। सो इसमें जो भी चीज सिखाए यूनिवर्स आपको, इसको अच्छी तरह सीख के अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरफ अगर लाना है, तो बिगेस्ट स्टेबिलिटी इज टू अंडरस्टैंड द मेंटल पैटर्न, एंड इसमें अच्छी चीजें आप डालिए, आपका लाइफ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। एंड दिस यू नीड टू एक्चुअली, फ्रीक्वेंसीज इतनी ज्यादा हाई लो होगी इस वक्त, इट विल, यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन, यू हैव टू बैलेंस योर एनर्जीज इन सम वे और द अदर, and you have to bring the kind of stability in your health, relationship, finances, everything you have to do
take care of a lot of green vegetables here in this time. Lot of green vegetables should be taken because stomach may be affected in this moment, because stomach से कुछ चीजें स्टमक में रोकी जाएगी इस टाइम. So अगर 5 मिसिंग है तो और ज्यादा you need to be very very careful of your stomach and other systems of the digestive systems of the body. And as 6, I think 6 I've already explained. So this is a fight between Venus and Shukra will happen, though they are a friend on the above surface. But you should have a bigger laksha in your life. But I will tell, because this is the greatest opportunity कि आप अपना resource को conserve करें this time. Even resource आप सबको conserve करनी है इस वक्त. Because resource को आप जैसे conserve करोगे, use that resource for becoming resourceful for a higher purpose. आपका लक्ष्य बड़ा strong होना चाहिए इस वक्त. Instead of a small लक्ष्य, think of a bigger लक्ष्य. Think जिस लक्ष्य में बहुत सारे life परिवर्तन कर सकते हैं. The more grand these lakshas are, and if you can do a kind of step you can take for the grand lakshya, it will benefit in your life. So Ketu people are a little safe this time. I will say, because Ketu इसीलिए safe रहेगा क्योंकि last year lot of things has happened in your life. मतलब this year 2023, 7 people should just utilize what they have learned from this year. That is. So 7 people. Who are you talking? Number 6 people. लैंड खरीद सकते जी हो. जी या लैंड खरीद सकते हो. यू कैन बाय लैंड. या 369 वाइब्रेशन में लैंड 9 पीपल के लिए बहुत अच्छा टाइम है लैंड खरीदने का. बट 6 यू कैन स्टिल बाय लैंड and you can go ahead. Resource बनाओ अपना. Land is a good resource. Yeah, I will go ahead. But check it very carefully. Every documentation. जल्दबाजी नहीं करना है. Number 6 people. Okay. No depth. मतलब जितना कम डेप्थ होगा उतना ज्यादा बेहतर रहेगा. Because आप डेप्थ क्लोज नहीं कर पाओगे अगर लैंड खरीद रहे हो तो आप मेक श्योर दैट आपका बैक एंड का जो चीज है वो सारी चीजें पेपर्स आर क्लियर. यू हैव अ वेरी गुड थिंग दैट यू विल एबल टू रीपे एवरीथिंग. अगर आपके पास है तो सारा चीज सोच समझ के करना. देन यू बाय. और देयर मे बी चांसेस खरीदने के बाद यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कहाँ से खरीद रहे हो. लीगल पेपर्स, ऑल दिस थिंग्स, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल इन दिस थिंग. Also, 5 people should be very careful this time to check their legal papers very very carefully. Do a kind of documentation very carefully, because there are too many frequencies happening. So there is a this frequency and there is a stop frequency. So there's a kind of a confusion that may take place in their mind. So the 5 people should be very very careful in choosing the thing. 7. उसके बाद 8 people I have talked about. It is a double engine hard work time, double engine stoppage time, double engine problem time. So this people should be very very careful. They are ready to grind themselves this time. तो ये डबल जब 8 आता है अपने को ग्राइंड करने का टाइम है. उनको ग्राइंड करना है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करनी है, पिस जाना है, so that you can get the kind of a reward which you have to do, and always be on the right path. Number 9 people, so 9 and 8 doesn't gel together. So be ready for lot of fights, लॉट ऑफ रिलेशनशिप खत्म करना, घर को साफ करना, बिकॉज आपके टाइम आ गया है लाइफ में कि अभी 9 नंबर पीपल शुड क्लीन अप देयर होम. जो चीज नहीं चाहिए भाई साहब हटाओ लाइफ से, बिकॉज अभी उनको एक बहुत बड़ा चीज होने वाला है लाइफ के अंदर. अगर वो टॉक्सिक चीजों को नहीं हटाएंगे इस टाइम में तो उनका आगे चीजें नहीं बढ़ेगा. सो दिस 9 पीपल हैव टू अंडरस्टैंड हु इज राइट हु इज रॉन्ग इन देयर लाइफ. जो आदमी उसको पेसिमिस्ट है उसको डाउनफॉल कर रहा है, जो जगह पे कोई भी गंदगी चीज, कोई भी एपरेटस गलत काम कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, दिस इज अ हाई टाइम दैट दे शुड एलिमिनेट एवरीथिंग फ्रॉम देयर लाइफ. फॉर द 9 नंबर पीपल, यस, जमीन नंबर 9 जमीन के ऊपर एंड नंबर्स नीचे के नीचे, सैटर्न इज जमीन के नीचे. सो दे कैन डू अ काइंड ऑफ बिल्ड पिलर, इसे जमीन खरीद सकते हैं, जमीन का काम कर सकते हैं. ऑल दिस अ वेरी फेवरेबल टाइम. तो रियल एस्टेट्स के लिए ये थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी टाइम आएगा जहां पे रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. नंबर 9 हुआ द पर्सनल नंबर, but there will be a lot of conflicts with them because Saturn is a kind of a warrior and they do not gel together. तो कहीं ना कहीं you will face a lot of problem with the government people, junior subordinates में. But eventually number 9 people will be a winner this time. So इन लोगों अगर ज्यादा अपना बॉडी में तेल यूज करेंगे, अगर ऑयल्स का इस्तेमाल मैसेज वगैरह जब करने में यूज करेंगे, इफ दे कैन गो टू pour water even to Shani Maharaj, and this is going to create a kind of better result for them hugely. उनको heat पे काम करना है, and this is going to be a greatest diplomatic year for them. They will able to solve, eventually they will able to solve all the problems. So if you have anybody who is having a 9 personal number, मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो वे वी वर्क. मतलब आप काम कर सकते हैं स्पिरिचुअल पर्सन. आप ढूंढो जिसका 9 पर्सनल नंबर आ रहा है, आप उनको देख लो पहले, दूसरे और फैकल्टी उससे भी काम करवा सकते हो. बिकॉज इवेंचुअली दिस 9 पीपल विल डू अ लॉट ऑफ रोल. जिसका पर्सनल नंबर 9 आ रहा है, लॉट ऑफ रोल दे विल प्ले इन दिस टाइम फॉर एवरी वन ऑफ यू.
1 से लेके 8 तक के लिए लाइफ में जो भी काम करना है, 9 people can get the job done for them. So this is something which I'm just giving a ballpoint secret at the moment. Yes, Anipra, go ahead, tell. Unmute yourself, yeah. हाँ सर। हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि एज वाला जो पीपल है, आप तो बोल रहे हैं कि उनको हार्ड वर्क करना है। अगर उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया तो इसका कोई नेगेटिव इशू ऐसा कुछ आएगा, नेगेटिव इशू? देखो सैटर्न क्या करते हैं, आपने आगे के 9 साल में क्या किया उसका रिजल्ट देगा। अगर सपोज आपने गलत खाना खाया तो इस टाइम बी रेडी टू गेट द स्टमक अपसेट, ह्यूजली स्टमक अपसेट होगा, ऐसे कुछ बीमारी आएगी जो प्रॉब्लम करेगी। अगर किसी को आपने बहुत ज्यादा नुकसान किया 9 में, इतने साल तक यू हैव नॉट अंडरस्टूड, सपोज किसी ने बहुत ज्यादा किसी के साथ गलत व्यवहार किया, गलत कर्मा किया, तो इस ईयर इट इज गोइंग टू बी ह्यूज पनिशमेंट फॉर देम। मतलब पता भी नहीं चलेगा लाइफ कितना मिजरी में लेके चला जाएगा। कैसे उठे इस चीज को? तो सबसे पहले अगर खुद को समझ में नहीं आया तो कि गो एंड प्रे टू द पर्सन, टू द लॉर्ड ऑफ दैट नंबर। तो इसके लिए 8%, अगर उसको फर्स्ट स्टेज इज बी रेडी, बी रेडी टू डू हार्ड वर्क अगेन। अगर इस ईयर भी वो अपना पूरा ताकत लगा देगा तो हो सकता है इन द कमिंग 2 3 4 years देयर इज अ पैटर्न विच विल फॉर्म इन दिस पर्सन्स लाइफ एंड ही और शी कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। समझ में आ गया? Yeah, my son's personal number is 9 in during 2024. Yeah, so your son, it's a purification term. Tell your son to become very careful in dealing people, because अभी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा अंदर, very angry हो जाएगा, कुछ कुछ चीजें देख के उसको बहुत ठीक नहीं लगेगा. So he should be very careful of the things, but he should be mentally ready to solve problem. Finally, eventually, this year may give him what he is trying to do. Uses diplomacy, uses थोड़ा सा साइलेंट लेके, थोड़ा सा कूल रह के अगर काम करेगा तो इवेंचुअली ही विल गेट टू द थिंग. एंड ही शुड प्रे टू लॉर्ड हनुमान इफ ही इज प्रेइंग, और यू कैन प्रे टू लॉर्ड हनुमान दिस टाइम टू गेट हिम आउट ऑफ this conflicts of the Mars, and it's a fight conflict. It's a Mars and Saturn conflict. It's a kind of fight between juniors. So he should take care, if he's in a company, take care of the juniors, be good with the seniors also. That is what thing he should do this time. Yes, Jasmine, go ahead. We are about to हो गया आज. I thought मेरा कुछ कर्मा बैलेंस करने पे क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये पर्सनली मेरे साथ हुआ है. जैसे कामवाली बाई जो मेरे घर में आती थी, हाउस हेल्पर, तो उसके साथ एक थोड़ी कहासुनी हुई और वो काम छोड़ के चली गई. तो उसका बैलेंस पेमेंट जो था, मतलब वो 15 दिन का, वो अभी वो लेने आई ही नहीं, और मेरे ईगो की वजह से मैंने खुद से जाके भी नहीं दिया. बट इट हैज ऑलवेज बीन ऑन माइंड दैट मतलब ये उसका पेमेंट है, कभी मिलेगी तो उसको दूंगी. तो अभी वो मिली ही नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो ट्रेवलिंग. सो नाउ बट दिस इज स्टिल इन माई माइंड सर. So इसको कैसे बैलेंस करना है? So I will tell you some suggestions quickly. So what you can do, आप उसका फोन नंबर वगैरह जानते हो, कहाँ लोकेशन है. नंबर 1, सर्वेंट्स जब लिया करो एटलीस्ट फोन नंबर एंड लोकेशन रखा करो अपने साथ हमेशा. दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग इज यू शुड नो समथिंग. अगर आपको उसको नहीं मिल रहा है तो एक छोटा सा आप काम कर सकते हो. यू कैन फॉर सम टाइम, जितना उसका अमाउंट है, यू कैन कंट्रीब्यूट टू सम पीपल. दिस इज माई जस्ट ये सजेशन. ऑन सैटरडेज को कुछ कहीं पे जाके इन हर नेम, व्हाट हैपेंस इज दैट, हमारा एक हिंदू शास्त्र में, हमारा वैदिक शास्त्र में बहुत अच्छा चीज है. हम जिसके लिए भी दिल से काम करते हैं, जिसके लिए भी दिल से देते हैं, तो उसके नाम पे मिल जाता है. फॉर हर नेम, इन द नेम ऑफ दैट सर्वेंट, you can donate it to a needy person, the same amount, and give it to that person, and you cut the connection and ask for a little forgiveness. Just please forgive me, do me. It will work exactly. तो आप जब virtues किसी को दे रहे हो तो उसके नाम पे अगर प्रे करके दे रहे हो तो उसका virtues कहीं ना कहीं उसको लग जाएगा उस चीज में. जैसे हम पितृ पूजा करते हैं, फादर मदर की डेथ हो गई, हम यहाँ पे ब्राह्मण को दान दे रहे हैं. What is the connection with the Brahman and my father? वो तो अपने दुनिया में है. How are you paying him? We are paying that Brahman because in the intention that, sir, I am giving it to you, heaven, God, please listen, so that I am, whatever virtue I am getting by giving this, that virtue should be given to that person. So up on the soul level, you can give that person the virtue. आप उसको वर्च्यू दे सकते हो बाय डोनेटिंग इट. सो आप उस वक्त बोल सकते हो, डियर डिवाइन, डियर दाओ द सोर्स, मैं जो इसको कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, इसका जो अच्छा गुण मेरे में मिलना चाहिए, दैट कंट्रीब्यूट यू गिव इट टू दैट लेडी. तो आपका जितना भी है 1000 2000 3000 रुपए, उसका वर्च्यू उसको लग जाएगा. सो आप उस लेवल में दैट यू कैन कॉम्पेंसेट
बट देर इज अनदर क्वेश्चन, दिल से मांगोगे तो वो लेडी भी आपके पास आ जाएगी, मिल जाएगी. तो देर इज अ सोल कम्युनिकेशन यू शुड डू. डियर डिवाइन, डियर द सोल, फर्स्ट यू शुड डू वेर एवर दिस लेडी इज देयर, प्लीज मेक हर योरसेल्फ विजिबल इन फ्रंट ऑफ मी. तो आप हो सकते हैं देखोगे अचानक से, इफ शी इज मतलब देयर, वो अचानक से आपके सामने भी आ जाएगी एक दिन. दैट इज द टू रूट्स आई हैव गिवन यू, एंड द मोमेंट यू सी दैट लेडी, प्लीज गिव इट टू हर immediately, don't think twice. Understood, Jasmine? सर थैंक यू सो मच सर. You're most welcome. हमने दशा पैटर्न अभी सीख ली, साइकिल ऑफ लाइफ अभी हमने बात कर ली थी कि कैसे ये पैटर्न्स आ रहे हैं और कैसे इस पैटर्न्स को हम काम करेंगे. सो हमें एनर्जी फ्रीक्वेंसी भी मैंने आपको करके दिखा दिया न्यूमरोस्कोप में, कि कैसे आपको पता चलेगा अभी कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं है करंट ईयर के न्यूमरोस्कोप में. सो दैट यू कैन बैलेंस. अगर वो आपके लाइफ में शुरू से ही नहीं है, बर्थ में से ही नहीं है, वो फिर से ये इस साल में आ रहा है, तो यू नीड टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल दिस टाइम. यू नीड टू चेक योर अवेलेबल नंबर. ओके, आपके अपना अवेलेबल नंबर क्या है, लाइक द वे नागेश अभी एक्सप्लेन कि मेरे पास ये अवेलेबल नहीं है. तो नाउ दिस इज बोथ द थिंग्स. इस ईयर में अगर वो नंबर आ रहा है तो इट इज गोइंग टू बी अ पेनफुल ईयर. यस डेफिनेटली. नहीं है इस ईयर आ रहा है तो वो पेन लेके आएगा, कुछ लेसन लेके आएगा. कैसे निकलेंगे बाहर, उसका कर्मा करके सिंपली. उस वो जो कर्मा डिमांड कर रहे हैं, कैसे होएगा, अगर उस कर्मा से किसी को हेल्प कर सकते हैं तो वो, जैसे जैस्मिन का केस है, तो वैसे ये चीज सॉल्व होएगा. चेक योर मिसिंग नंबर्स. तो अवेलेबल नंबर विल ब्रिंग द एनर्जीज फॉर यू. तो अवेलेबल नंबर है और अवेलेबल नंबर है तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू. ये आपके लिए आ रहा है कि ओके, यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, विल गो अहेड विथ यू. मिसिंग नंबर है तो मिसिंग नंबर विल गिव लेसन्स. Most important thing is the activated number. By now I hope you will able to see the activated number game. अगर इस वक्त activated number आपकी जिंदगी में आ रहा है, so this is the time, marriages, all these things will start taking place in your life. Job opportunity will take place. All this thing. Last time बहुत अच्छा सवाल किया था and I said the very same thing. अगर activated number कहीं से आ रहा है आपकी लाइफ में अंदर, it will be very great boon for all of you. तो वो आपके लिए एक अच्छा काम करके जाएगा, आपको एक अच्छा चीज देके जाएगा this time. So be वेरी वेरी केयरफुल ऑफ दिस एक्टिवेटेड नंबर थिंग. ये चीज आपको, मैं बहुत ज्यादा इस एक्टिवेटेड नंबर पे काम करता हूँ, तो कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपके लाइफ में आपको कुछ देने के लिए आएगा, बी वेरी केयरफुल वेदर दैट पर्सन हैज एक्टिवेटेड नेम और अल्फाबेट इन देमसेल्फ. सो बी केयरफुल. बहुत ही ब्यूटीफुल दशा है. अगर 8 आपके लिए एक्टिवेटेड नंबर का काम करेगा तो दिस ईयर विल डेफिनेटली बेनिफिट यू वन वे और द अदर. मतलब आई कैन से अंटिल योर कर्मा इज वाज, इफ योर कर्मा इन द लास्ट 9 years had been good, be ready to get. So this is the miracle, this is going to happen to the people उसका activated number अभी activate हुआ है, एक spark आपको मिलने वाला है. It's going to be good. So this is the, I prepared the personal horoscope and I have seen the pattern. So this is all about it today. Any more questions, do let me know. हम लोग 1.5 घंटा, I thought I will finish this up as fast because मेरे webinars काफी ज्यादा बड़े हुए हैं, because I really want you guys to meet one person, one very interesting person here from the source guidance team. So this is the time, I'm all the time telling you, this next year is all about you, and don't miss this opportunity. You guys should know what is your strength, weakness, opportunity, threats. You should know what is your talent. You should know what you have to do. Prepare your chart, your goals right now. आपके पास अभी we are in 16, आपके पास ना और 15 दिन 16 दिन आपको मिल रहा है. एंड वेरी ब्यूटीफुल थिंग इज हैपनिंग 30th December. एस्ट्रोलॉजी भी अगर हम थोड़ा सा ओपन करें, 30th December के बाद जुपिटर इज गोइंग टू बी स्ट्रेट. तो जुपिटर ने अभी जो पुराने जो भी चीज आपका वो भी वाइप आउट कर दिया. आपके साथ अभी 15 दिन आपके पास अभी केतु मौजूद है. प्रे टू लॉर्ड गणेश एवरी टाइम. व्हाट आई मीन बाय लॉर्ड गणेश इज द गणेश एनर्जी ऑफ द सक्सेस. केतु विल स्टिल गाइड यू. अगर आप उससे पूछना चाहेंगे ना मेरे को नेक्स्ट लाइफ में क्या, नेक्स्ट ईयर में क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें, यू विल स्टार्ट गेटिंग येस नो येस नो. तो आप एक 2 वर्ड बनाए, कि येस एक नो का बनाओ. रिलेशनशिप नो, उसको नो बास्केट में डालो, येस बास्केट में ये मुझे करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करने का. सो नाउ जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग ऑन द थिंग. नाउ कितने लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है, दोज पीपल हु वर इन माय पिरामिड वर्कशॉप, आई हैव गिवन यू द पूरा फॉर्मूला दिया है उसके अंदर. फाइंड आउट दोज पीपल कहाँ बैठे हुए हैं. Nagesh, you need to find out the people who are there in the slums or wherever. Just how many lives you can change over there. Okay, don't worry about the money. Your money will still start growing. So all the people you start working in. So यहाँ पे जो भी लोग हैं, people who are learning numerology, astrology, source guidance program. What can you do the change? What can you bring one more person's life में क्या change है? Himanshu ji, how can you use your talent and things and opportunity? How can you bring one smile to another person's life? Now this is the time which is going to
tell us, this is the biggest opportunity, biggest frequency. Saturn हमें डराता है, हार्ट को टीचर है, बट Saturn इतना कुछ दे जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा लाइफ के अंदर कि क्या मिल जाएगा क्या नहीं मिलेगा. So don't lose. That is why I use my word. Do not miss 2024. It's going to be a life-changing decision for all of you if we are going to. बाकी सब कुछ अगर ठीक रहा for our source guidance program. So there's a student of source guidance program, Gautam Bhattacharya. Gautam Bhattacharya, I want you to come on screen and share your Yes, experience with what were you don't share the secrets, because I don't want you to share any secret what we are learning, yep. what level we are trying to achieve. ये नहीं है इस क्लास के लिए, but you just share that what we did on the first Experience. thing and how much weight it is out in just maybe 2 classes. I mean, did just 1 class with him, and how much the things you have got. Just share, just open your mind up, because your now life is to dedicated to change their people's life also. So please go ahead. No secrets, please. No techniques क्या हमने किया, but just share क्या आपका था और whether you have. No. Yeah, please go ahead. The experience I like to share. And don't worry about language. आप, मैं चाहूंगा आप हिंदी में बोले, ये मतलब अच्छी तरह हिंदी में बोले. Use the little so that everybody understand what you are saying over here. So I request you that thing if you can. ओके, एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर बोलना चाहूँ तो जो 2 क्लासेस का एक्सपीरियंस है उसमें मुझे कुछ एक फोर्स है जो धक्का देते रहते हैं कि ये काम पेंडिंग है, ये काम पेंडिंग है, उसको करना है. मैं अगर कहीं पे बैठा भी हूँ तो मुझे वो दिमाग में ये चीज आता है कि ये काम तुम्हारा पेंडिंग है, यहाँ पे बैठने से नहीं होगा, तुमको वहां जाना है, इसको करना है. तो वो लगातार एक फोर्स पीछे से धक्का देते हैं जो हर वक्त वही बोलते हैं कि इसको करना है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तुम्हारा टाइम इसके लिए है, उसको करना है. और सेकंड थिंग है कि जो लेथर्जी या फिर जो टायर्डनेस है वो फील नहीं हो रहा है. वो चीज कैसे नहीं हो रहा है पता नहीं, लेकिन अब पहले होता था कि दिन भर काम करने के बाद शाम को एक थकान सा महसूस होता है, वो चीज नहीं है. और सुबह जैसे आंख अपने आप खुलते हैं, वो मतलब टाइम अलार्म से पहले आंख खुलते हैं, और वो थोड़ा सा अपना मतलब जैसे मैं चाहूँ, मतलब जल्दी उठना चाहो तो जल्दी भी उठ सकता हूँ, अगर थोड़ा सा लेट करना है अलार्म तब तक बजते हैं, लेकिन उससे पहले आँख खुलते हैं. ये जस्ट 2 क्लास के बाद मुझे ये एक्सपीरियंस मिला है कि जो एक रोड मैप है वो रोड मैप सामने दिखाई देते हैं. बाकी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे कर पाऊंगा, लेकिन वो रोड मैप आंखों के सामने मतलब ड्रॉ होके फ्लैश होते हैं वो हर वक्त में. मतलब जैसे कहीं पे अगर बैठा हूँ कुछ बात कर रहा हूँ, उसमें कोई रिजल्ट नहीं है या फिर वो मेरा काम का चीज नहीं है, तो मुझे वो कोई कि पता नहीं क्या है, तो वो पीछे से धक्का देता है कि उठो, तुम्हारा हो गया, जाओ, ये काम तुम्हारा इस टाइम पे ये काम है, उसको करना है. तो ये मेरा फीलिंग है, मतलब एक्सपीरियंस है 2 दिन Okay, का. cut it out. Bus, that's it. I don't want to speak further. Thank you so much for sharing. So this is the magic of source guidance program. Just wait, Nagesh, I will come back to you. So this is just, I think he's 2 days into this program, and I'm so happy that he's into this program. And I told him that something is going to happen with him. And by the way, source guidance program के पहले मैंने उससे लिखवाया था कुछ चीजें, and he was unable to write what is actually his life issues. I think in 1 day, I am so happy with him. He had 3 major blocks in his life, and today he is able to see the blocks very carefully, and there is a complete answer, and the roadmap has been given just by 2 days of doing source guidance program. अभी तो क्या बोले, पिक्चर अभी बाकी है. It is just a kind of preview that people are saying miracles are happening worldwide. There are students, and this is not that you can just enter into this program. There is a certain method of approval on different levels that you can do the needful. But I think you guys, I give very small experiences to you guys of the source guidance program. किस level में ये program जाएगा? I think there is nothing at the moment, by the grace of the source, there is no program in the world that can touch you so much. So that is what I am saying you, and you must, may source bless and guide you someday to take up this challenge. And it is not an easy thing for him. Even not is going to be not easy for my students. उनकी life 360 degree turmoil से गुजरती है, and their life gets completely into different dimension. Maybe we are going to wait for some more students. अब ऐसा होता है कि दूसरे countries की timing ही अलग हो जाती है, and they
There are certain things which even may God plans. So this is beyond comprehension, something which we had doing it into a multi-dimensional thing. It is a kind of hand holding, I'm telling you this time. And there is it's a team which is working, which is beyond comprehension. So that's what I'm saying. The 2024 is all about you. आप किस तरह से अपनी आत्मा को सुनते हो, आप किस तरह से अपनी सोल माइंड बॉडी को यूज करते हो, आप किस तरह से अपनी एनर्जीज को यूज करते हो, आप किस तरह से अपनी आउटर ऑरा बॉडी को यूज कर सकते हो, आप किस तरह से आपके अंदर दिया हुआ टैलेंट को यूज कर सकते हो, आप किस तरह से आपके अंदर जो मिलियंस ऑफ एनर्जीज आपके बाहर है जो 24/7 आपके लिए काम करती है. हाउ कैन somebody who was sleeping and waking up late without anything, any alarm clock, is waking up early in the morning, and how can somebody knock him, get, hey Gautam, wake up in the morning, you have some pending tasks. दुनिया की कोई भी अलार्म सिस्टम नहीं है जो ये चीज आपके साथ कर सकती है. And what are they knocking about? Don't waste this time, don't waste this year, this is something which you should do, you should utilize it. दुनिया की कोई भी टीचिंग अभी तक मैंने नहीं देखी जो ये काम कर सकती है. एंड दिस इज पॉसिबल ओनली मिरेकल इन दिस थिंग. सो यू गाइस हैव बीन, मैं ये क्यों शेयर करूं, बिकॉज यू हैव गाइस हैव बीन विथ मी टुगेदर, and somehow I feel that I have that responsibility for all of you. But are you guys ready for doing the thing? Are you guys ready to take up the thing? Are you guys ready to give up the excuses of the life? From now onwards, this team will not give excuses. Computer खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं. Don't worry about seeing me. Sit in one place and listen to me from your eyes and the heart. You will get everything, Devashish, that I'm going to teach in this subject. You will not miss a single thing. That is my promise. आप कहीं पे भी कोई भी कभी भी मेरा lecture miss करोगे, connect with me on the soul level, you will get that essence of what I am teaching you. इतना बड़ा बात बोल दिया यहाँ पे मैंने, और इससे बात नहीं बोलूंगा ज्यादा बात, because I am also limited, because there are some people who are very new who do not understand what I am doing. So I feel some kind of responsibility to feel you, but I cannot go, because whenever the higher energies are, they will just wait for you. Are you ready? So if you are ready, I and my mentors and my mentors in the physical and the invisible world are ready for you. That's what I can say at the moment. So so that is it for tonight. Yeah, Nagesh, you go ahead, but that is what this class was very important for me to do it on Saturday, and that is what I did it. And you are, trust me, just follow your intuitions and guidance systems, you will be taken care of. Yes, Nagesh, go ahead, tell Sir, me. thank you so very much for such an intense session today. Sir, it was very mind-blowing session, actually, I should say. And my question is, from which date the effect of New Year will activate, sir? With the date is for the numerological date, the first of the 12 midnight of 31st. I think people say some 15 days before the... That is called as cusp. That is called as cusp. Cusp meaning it has already started. The month has already started, and the events which are happening actually is taking you towards that. It is called as pre-preparatory cusp. जब कोई planet घुसता है ना, so there is a उससे पहले वो effect दिखाना शुरू कर देता है. For some people it can be even quarter month before, depending on वो क्या करना चाहते हैं. तो heaven plans, और कुछ लोगों को 12 बजे के बाद भी दिखाई सकते हैं, 15 days after that, depending on how much they are trying to work with you. So that is called as cusp system. A very good question. तो वो आपके लोगों के लाइफ के अंदर ये it has already started. We are 15 days, हम 15th के बाद आगे, today is 16th day. Some people say maybe in the after 20th it would start, the effect would start after 20th or something like that. It can start even on, it has already started in September for some people. Okay. It has started November for some people, trust me, and it is now the 15th is the ballpark figure. ये धीरे धीरे पीक होगा जब 7 तारीख में 7 days रह जाएगा, उसमें ये पीक होना शुरू हो जाएगा. देन 7 days में उसका पीक कम होना, यू आर नाउ एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट लीग. आपको गेट दिख गया है, जैसे आप खाटू श्याम जाओगे तो दूर से गेट दिख रहा है, धीरे 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 करोगे, आप खाटू श्याम के अंदर चले गए तो पीछे गेट रह गया, तो यू हैव ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द, बट यू हैव नॉट मेड द टेंपल एज येट. Temple is the event, but you have entered the year. So this is what is going to happen. So this is called as cusp. The word is CUSP. It happens in your date का जो भी चीज analysis करोगे तो उसमें ये सारी चीजें होता है. Okay. Thank you so very much, sir. Thank you. Yeah. So Himanshu ji, you need to get in touch with Gautam. Share with him. You can share your personal number directly करके आप करो, या नहीं तो मेरे को contact करना, मैं गौतम का नंबर दे दूंगा. Gautam is going to do a work on you because he is now getting trained in a higher dimension. So now Gautam can, if Gautam will start thinking about you, even Gautam will able to bring a lot of change in your life. Even Gautam is not aware of that power. I am telling in this moment, at the moment. All of you who are there in this webinar, I am telling you, take one step and you will start seeing the miracles what is happening. एक छोटा सा date of एक word, sun के ऊपर काम करो, just work on sun. Surya, number 1.
Start working on number one. Help people with number one, 111. You see where you all guys are going. 18 बंदे यहाँ पे है network. Try to see where you guys will take them to you. This is my belief, not in myself. This is my belief in that power. So you can imagine what I'm trying to tell you. So I don't want to interfere much with your karmas. That is what I'm saying. You take care of karma. I cannot change your karma. You have to do your karma. I can just tell you, go in this direction, go in this direction. You will find, even you will eventually not repent. आपको रिपेंटेंसी नहीं होगी जो जिस मैं बता रहा हूँ आपको. और प्लीज बी एंड प्लीज नाउ स्टार्ट गिविंग बैक, गिविंग बैक, गिविंग बैक. बाकी हमने बहुत पढ़ाई कर ली, हम आगे बहुत पढ़ाई करेंगे, बट हम अब जब पढ़ाई करेंगे मैं वो एस्ट्रोलॉजी आपको नहीं बताऊंगा इसमें ये हो रहा है. अब मैं आपको एप्लीकेशन अप्लाइड में लेके जाऊंगा जल्दी से जल्दी. आई विल ओपन अप द गेटवे एंड आई विल टेल यू how to work on the number one is that you need to understand the sun. We will come eventually on the source guidance program and you will learn on that thing. जब number one पे क्या काम करेगा, number one किस तरह से काम करते हैं, उसकी कर्मा क्या होती है and उसको कैसे अप्लाई करना होता है लाइफ के अंदर. small things to big things and then you will start getting the things. So source guidance program में भी वो सारी चीजें हैं in a much more detail पे, right? So see you all, take care. I will be not able to come tomorrow, but I will be seeing you next 23rd. 23rd is the Saturday with some numerological new insight, and or maybe on 24th I will come with the astrology and the tips from the source guidance program. Enjoy this life, plan your life. I really wanted to see all of you having a paper and write down all the things. Where is OP Narang sir gone? Can I ask a question? Sure, go ahead, Jasmine. Okay, so I want Your to name understand. will be J, huh? You should do the work with J all the time. J and your surname. आप अपना नाम पे थोड़ा काम करो जस्मिन. नाम पे काम करूं. ओके सर, मेरा क्वेश्चन ये है, like I'm 27th born, so it is 9 in me, right? No. Sorry, break, cut. You are 2 and 7. Don't miss the 2. You are also lunar, you are Ketu. So it's a very good combination apart from 9. So आपका ये जो 2 और 7 का पावर है ना, ये आपको ना एक अलग जगह लेके जाएगा. ये इनको बोला जाता है पीपल, जब हम एडवांस में काम करेंगे 2 and 7 का हम उसका नंबर का मीनिंग हम निकालेंगे जो 2 and 7 क्या मीन करते हैं. बट मैं ये बता दूं, आपके अंदर एक खतरनाक एनर्जी बैठा हुआ है. आपको आप यू कैन यूज द पावर ऑफ द केतु एंड द मून टुगेदर. ये ना बहुत सारे चीज को पेनिट्रेट कर जाएगा जब ये एक्टिवेट होगा. आपको जितना लगता है आप कमजोर हो ना, उससे ज्यादा आप पावरफुल हो. ये दोनों नंबर मिला के आपको नंबर 9 बना रहे हैं. इट इज नॉट अ इंडिपेंडेंट 9. सो ऑल ऑफ यू न्यूमरोलॉजिस्ट है, आपके लिए 2 भी काम करेगा, आपके लिए 7 भी काम करेगा, आपके लिए 9 भी काम करेगा. This 9 is coming from the power of the moon and the केतु. केतु का पेन ना बहुत शार्प होता है, तो एक इमोशन एंड शार्पनेस काम कर रहा है इसके अंदर. सो ये अगर जब काम करना शुरू करेगा ना किसी के ऊपर भी, सपोज आप बहुत झेल रहे हो, दूसरों को झेल रहे हो, बट एक दिन ना आपने चिल्लाया व्हाट इज हैपनिंग दिस, तो उसका जो पेनिट्रेशन होगा ना सामने वाले बंदे को एकदम पिन पॉइंटली अटैक होगा उसके अंदर. So that is the power which you have got. So you should not miss the number which is creating it. So हम जब compound number के ऊपर काम करेंगे थोड़ा थोड़ा करके next time में, so you my advanced system is all about 52 compound numbers. तो उसमें हम सिखाएंगे कि इनका मतलब क्या है, ये numbers कैसे आता है, कैसे क्या काम करता है, क्या चीज बताता है आपको. So do you understand now? So you are more too, you are more gentle with the Ketu in the power on the background. Understood? अच्छा, I understand. तो आपने जैसे बोला मुझे अपने नाम पे काम करना है, तो मुझे नाम पे क्या काम करना है? मतलब Jasmine, there is a something called as स्वर्ग विज्ञान. Okay, स्वर्ग विज्ञान मेरा पूरा न्यूमरोलॉजी, जब आप मेरा स्टूडेंट बनोगे, when you are part of my courses, आपको स्वर्ग विज्ञान के बारे में पता चलेगा कि स्वर्ग विज्ञान कैसे काम करता है. So what is the power? Why देवता का नाम वैसे होता है? क्योंकि जस्मिन, आपको देखा होगा आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे आपको ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे जगह आपको चीजें स्टॉप कर दिया जा रहा है. Why? Because your name is ending with a hashanta, Jasmine. So how to change this name from some name which is like ever flowing? So then you need to get that name which will all, name is your power. Nobody knows your date of birth. You don't introduce yourself as a date of birth. Hi, I am 24 August 1947. So ऐसा कोई इंट्रोड्यूस नहीं करता. तो जैस्मिन नेम हर जगह जाता है, तो जैसे ही वो नाम जाएगा वो उस जगह वाइब्रेशन हिट करेगा. और ये नाम इज अ काइंड ऑफ अ ग्राफोलॉजी, इज अ मंत्र फॉर यू. इट इज यू, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग यू. जैसे भाई हमारे दुर्गा, शिवा, पार्वती. तो why this name has been given, why the name as Christ has been given? It is said that कि Christ crucify हो जाएंगे वहां पर जाके. So this is the science, this is called as स्वर विज्ञान. हमारे मुनि ऋषि ने इसके ऊपर ही काम किया. स्वर विज्ञान इज सोर्स विज्ञान, इट इज द सृष्टि विज्ञान. सृष्टि कैसे होती है? नाम से होती है. नाम इनसाइड योर माइंड.
the sounds which is being produced. So just check the sounds which is coming from your name, and that is why the hindrances which are, it will happen eventually. जब आप उस direction में आ जाओगे, automatically you will get a name that will start working with you. Understood? Sir, thank you. That is why मैं हर जगह ढोल पीटता हूँ. Be come to my classes and do, so that you will get something which will eventually benefit the people who are not even born in this world. आप उन लोगों को चेंज कर सकते हो. आप लोगों के पास उतनी एबिलिटीज अभी मैंने दे दी है ऑलरेडी. मतलब इन द लास्ट 26 webinars, 28 webinars, I've given you so much that you have not understood those things, the values of those things. You now, that is what I'm telling you. I'm again knocking you on this Saturday morning. Please, please, please wake up. You lions, no, lion नहीं, you human beings, you great beings. Lion तो बहुत ही एक unhygienic creature होता है. You are the great human beings. Wake up. This is the time that you should walk the talk, do the needful, and change the world. Everybody can do that. Everybody. Okay. So thank you so much for being here. Anything, I'm always a WhatsApp away. Just connect with me. Anything you require to uplift you in this soul journey, I am there with my all the weapons, all arsenals and all lethal weapons are with you. आप अपना change कर सकते हो. मैंने सब कुछ देके रखा है. Just go, take that ammunition. The fire in life. You guys are beyond competence. You do not know what you guys are. I'm feeling so happy by seeing you all the time coming. But now you need to charge yourself. मंगल को एक्टिव करो, because मंगल को एक्टिव नहीं करोगे शनि को झेल नहीं पाओगे. That is why तेल दिया जाता है. कोई ज्योतिष अगर आपको बोले ना शनि आ रहा है तेल दो, उससे पहले पूछो सर तेल क्यों दिया जाता है. He will say शनि के लिए. शनि के लिए तेल नहीं होता. तेल रिप्रेजेंट्स अग्नि. आप जब अग्नि लाते हो मंगल जीतता है. मंगल जीत, जैसे ही मंगल जीतता है शनि चला जाता है. तो अगर शनि को आप कम करना चाहते हो, you need to activate the fire inside you. Always there. Your kundalini is there. That is why pyramid meditation system was there. The pyramid, pyra, the fire to transform other people's life. And that is the connection of the pyramid meditation. So दुनिया में कहीं पे आपको ये वाला नहीं मिलेगा. आप लोगों को पिरामिड पकड़ा देंगे हाथ में. ये लो पिरामिड जी रखिए. Very good. I agree with that. But what pyramid I will give you is something you will not imagine in the times to come. For those people, those who are not even born in the soul world, they are listening to me what I'm saying at the moment. I told about the course which you are revising this. No, Sham, I think it is gone. It was till 15th of this month. So the course price has already increased. And what I say, what I do. मैं जो बोलता हूँ, I do it. So it has increased. So now it is in the high premium price. It is going to available. मैं थोड़ा बढ़ गया है सबका course का price. So you told me. नहीं, old rate खत्म हो गया. That was till 15th of. I'm sorry to say that was till 15th of December. Today we have entered into 16th of December. Today it is all in the increased pricing which you will get. That is the energy exchanges, because the things have all got upgraded. I am using lot of people, lot of technology on the back end. आपको पता नहीं चलेगा कि मैं ये क्लास में बुलाने के लिए I spend so much amount of energy I have to spend. So that is where somewhere I don't want it to be a hurdle in front of you. I don't ask anything. I don't think anything for you. But I think it is time that I contribute first. So I need to do that. But if you really wanted to enter, because I like the source guidance program, the people, every day I'm available to them. Every alternate day I am available to them. I'm entering deep in with them. So there is a team of many people who are working on the backside to create the flexi funnels, all these things which is going to happen. There is another team who are handling the WhatsApp modular system. We are coming with the kind of automation system. So I really wanted to serve. But if you wanted to be part of it, आपको कभी भी ना नुकसान नहीं होगा. आप एक चीज देख लेना, अगर आप इस सोर्स गाइडेंस प्रोग्राम, आपको मिलेगा बहुत ज्यादा व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. सो द फर्स्ट चैलेंज ऑफ द प्रोग्राम इज दैट यू बी रेडी विथ योर मैसेज सेंटर एंड परमिशन फ्रॉम द हेवन, कि आप जैसी कुछ चीज कोशिश करोगे, अगर वो चीज आपकी जिंदगी में हो जाता है, then you see that you are on the right track. So don't worry about it. Your mind, your body is enough to understand who is who. And that is going to be again relevant next year. Next year will be again an opportunity to knock below. आपको पता चल रहा है ये अच्छा है ये बुरा. You need to be very alert in that system inside you. Things will start working. You need to not need to do even the courses and all. Courses आप तब करो जब you wanted to bring a massive transformation in your life. जब आपके अंदर वो hunger होगा that yes, I need to transform myself, my family, various things. So then you do the thing. Then you see the results. So thank you so much. Yeah, and you guys have to motivate others now. Motivation is beyond comprehension then, but motivation with a right mission is the most important thing. I can just tell that what is your mission in your life. So rest you have to do again, right? Thank you so much. Thank you, Sham. Thank you, Jasmine. Thank you, Nagesh. Thank you,
Himanshu Thank you ji, so very much, sir. thank you. Devashish, thank you. Maya ji, thank you. Anipra, thank you. Shashi ji, Kshitij, thank you. Vipin ji, thank you. Yogesh ji, thank you. Nilima. May source numbers bless you beyond comprehension. All the best. Take care. Bye bye. Thank you, sir. Have a Thank you. grand year. Yeah, take care. Bye.